Wait. 3, 2, 1, play. Okay, it's time for the toss. Both the captains, please come here. Kingsway versus Team 17 Sports. Sports Ajay ji and captain of Team Kingsway Mayank, if I'm not wrong. The coin will be spun by Mr. Ompal ji. Who is going to call? Okay. Heads is the call from the captain of Team 17. Tails it is. So Mayank won the toss. Please Mayank, क्या करेंगे आप? बैटिंग First match, any nervousness? नो नो दैट्स ऑलराइट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बैटिंग करने का डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि ये सेम विकेट पे सेकंड मैच है और विकेट भी थोड़ा अच्छा लग रहा है सेकंड इनिंग में थोड़ा सा नीचे और स्लो रहेगा इसलिए वी आर बैटिंग फर्स्ट Okay, all the best for the game. On the other end, captain of team 17. Toss अगर आप जीते तो आप क्या करते? We would have bowled. So we are fine with this. We are quite happy. We wanted to bowl first. We wanted to see the pitch, how it behaves, and contain them as low as possible, and then come and chase. That's what our plan was. What is your opinion about the wicket? Why do you want to bowl first? So we are playing for the first time on this pitch. So we wanted to first observe and see before we come on the bat. So we'll try and do some experiments with the ball and try to contain them as low as possible. Obviously, the first target is they are a good team. They are a good bunch of good talented cricketers. So our idea is to contain them below 200. If we do that, we should come and play with our strengths. Okay, have a nice one. So that's the news from the toss area that team Kingsway won the toss and they have decided to bat first.
So we are all set for game number 2. Kingsway taking on 1-7 Sports. And the fielding team, they are set off. They look pumped up. So Kingsway winning the toss and they elected to bat straight away. They had no hesitation. And that's what has worked in teams' favor. You know, whoever has batted first, they won games convincingly. Even the first game of the day, we saw the team batting first, putting on a big total on the board in excess of 220, and the team chasing were nowhere close to that target. And that is a question when we raised when we were talking in the midway break. Does the pitch get sluggish slightly in the second half of the game? The match about to start. The openers are any time from here will be walking out to the center. Both these teams are playing their first game in this tournament. You know, they would have been watching the games last 2 days, watching the teams keenly. And majorly, 3 teams were involved. And SCC putting on a show, putting on an absolute display. Both their batters and their bowlers equally dominating proceedings. Tremendous effort put in by SCC. They march forward into this tournament, but the team from Kashmir, the men in blue, coming back strongly after that defeat. This would be a morale boosting victory for them. They stay afloat in this tournament. Meanwhile, these two teams, you know, I was talking about the fact that they would have analyzed the games, they would have analyzed the pitch. Kingsway, you know, the moment the coin fell in his favor, the Kingsway captain, he had a smile on his face, a big beaming smile, and he said, we're going to bat first. 1-7 Sports, meanwhile, yesterday, you know, somebody from the camp stated that, yes, we are watching the games keenly. We have marked out our players. So you can be rest assured that all these players involved in every single squad, they're watching the games keenly. And where do you watch it, you might ask? It's JBMR Sports Live, who are our official broadcasting partners. These quality pictures are brought to us by the wonderful production crew of JBMR Sports. We'd like to take a moment and thank them at this point of time. Lokesh and his team. So as promised in the morning, this is Super Sunday, the second game coming your way. You know, even though the first one turned out to be a one-sided affair, one side dominating proceedings, the second game should be a gripping one. I can tell you that these two teams are evenly matched. And whichever team wins this one, everybody wants to start off a tournament with a victory under their belt. They'll go from strength to strength if they can get a victory straight up. You know, that sets the tone for every tournament. The men in pink, they are discussing their plans out there in the center. They seem to be raring to go. The umpires are out there. And now the openers will walk out.
अच्छा आपको फोटो चाहिए थी ना चार्ज हो रहा है चार्ज भाई क्या चाहिए को मत यार प्लीज खाली जा रही So out come the openers. Both of them strolling down to the center. They would have been anticipating coming out batting first when their captain elected to bat first. Quickly got ready. And now they are at the center, ready to take the strike, ready to face the first delivery. Aryan will be facing the first delivery. 1-7 Sports. They're starting off with spin. Now, this is something we talked about, spinners. They looked stronger in these conditions, and especially in the second phase, once the ball gets older and softer, spinners have dominated. They've got a lot of turn, especially in the previous game that we saw in the second innings in the latter half. We saw big turn. The left arm spinners in particular, they got a lot of bite off the pitch. Aryan Juyal. Aryan Juyal, he's a force to reckon with. Young talent. He's made a name for himself in the domestic circuit. Gets behind the line, pushes it back to the bowler. No chance of a run. That's a dot delivery to start off with. The left arm spinner coming in to bowl the first over. Ali Murtaza. Ali Murtaza, another seasoned campaigner. Aryan Juyal punches it. First runs on the board for the Kings. They're off the mark, up and running. Aryan Juyal off the mark with that single. Gets Karan Lal back on strike. Karan Lal rather facing his first delivery. Ali Murtaza has a lot of experience bowling within the power plays. As I said, he's a seasoned campaigner. And there's no dearth of options as far as the 1-7 Sports team is concerned. That's a good looking shot all along the ground, but finds the fielder on that occasion. Not the placement he would have liked. Straight to the man. Gets to the pitch of the delivery. Bowls it full, bowls it flat. And that would be the idea for Ali Murtaza. He knows that he can't really float it up within the power plays. Oh, that came in. That went in with the angle. The slider definitely missing the leg stump, but a good delivery. Confusing the batter. Karan Lal with one that comes in with the angle. Uses his feet. Oh, that could have been a wicket. That could have been a wicket. Decisive moment in this game. He got nowhere to the pitch of the delivery. Karan Lal has totally missed just that one. But the wicket keeper makes a mess out of that one. Nicely bowled. Good drift as well. Turns it away towards the onside. He's off the mark. Brilliant over. Fantastic start provided by Ali Murtaza. Just 2 runs coming off it. What an over that turned out to be. The mind. It is our master. The master of our destiny.
the way we live. In at both ends. Is not something that you're used to, something you don't see on a regular basis. This is a T20 game, remember. But so far it has worked. The question is, will the batters go downtown? Will they use their feet? He goes for something unconventional. He's lucky to get away with that one. You know, the conventional shot's not working for the batters so far. They haven't been able to pull it off. So he looks to do something fancy, does Karan Lal. Straight to the wicket keeper. Drifting onto the pads, just helps it along. He's worked it in the gap. There is protection. There's a fielder acting as a boundary rider. Gets around it, keeps it to 2. Gets a brace. That's the first bit of runs that Ashish Suhaga has given away in this fresh new burst. Playing his first game in this tournament. Another one that's come in with the angle. You know, whenever a left arm orthodox bowler bowls up, especially with the fresh new ball, you know, you'd have to look out for the ones that come in with the angle. Very rarely with the shiny new ball will the ball turn away from you. But if that happens, you have to be mindful as a batter. That could put a lot of doubts in your mind. Aryan Jayal Goes after it. Gets all of it. That's the first maximum of this game. What a brilliant hit that was. Well, he made his intentions very clear. Just clearing his front foot. Puts it away in grand fashion. Just short of the boundary ropes. I thought that was a 6, but it's a boundary. Just marginally short of the boundary ropes. Goes after it. Gets That's all the of risk it. of bowling That's the spin out first in the power maximum plays. of this game. Because the batters have it far too easy on this deck. They just hit it within the line. Goes again. This is higher. The question is, has it got the distance? I think it just about has, or we'll wait for the signal from the umpire. But it's a boundary nevertheless. It's gone all the way. It's a maximum. So 10 deliveries. It's 10 runs of 2 deliveries, rather. I beg your pardon. And NC over on a high. Started off well, Ashish Suhag. Line. But Aryan Goes Jayal again. This has is upped the higher. tempo here. The question is, has it got He's the taken distance? him to the cleaners. I think So 13 runs off his first over. Second gone. And the Kings, they are 15 for no loss. Ali Murtaza. He's got a lot of tricks up his sleeve, Ali Murtaza. He's seen the test of times. Has been around for quite some time. The Kingsway team. The Kingsway team. They go after him. Is that a wicket? It is a wicket. That's straight down the throat of the mat. He came in running. For a moment, I thought it had cleared the ropes, but not to be that travel straight to him. That is a fine, fine catch by the man standing at long on. He was wider. It was hit straight. But Karan Lal, the Kingsway he has to team, depart. That is a they brilliant go catch. after him. That ball was traveling, I can tell you that. And Kingsway have lost their first wicket in the form of Karan Lal, who has to depart. Big wicket. Ali Murtaza, I was talking about his experience.
Talking about his guile, The Kingsway there you team, have it. That's why he's one of the best in the business. they go after him. You can see that that ball was traveling. He came Is in that- quickly, almost bursting through his hands. That was hit hard. Aryan Jayal, he's at the non-striker's end. He would be welcoming his new partner. Another right-hander walks out to the center. You know, a few inputs would be given to him by Aryan, telling him how the pitch is behaving. And also, one input given to him would be not to take too many risks against Ali Murtaza. He's bowled splendidly. He's hardly given away anything. Nice, he gets behind the line of the ball, just pushes at it, just poking it. Straight to the man, another dot delivery. So apart from the length, the lines have been immaculate from Ali Murtaza. Pushes at it, almost checking his shot at the last moment. No chance of a run there as well. Dikshu. He's the new man coming in at 1 down. You know, these two teams once again star-studded. A lot of international stars. They've come out to the center today. They'll be playing for both these two teams. Once again finding the fielder. This is spectacular bowling. You know, T20s more than taking up wickets at crucial junctures. It's about bowling, dot deliveries. Goes big. Dikshu goes big. Has he got all of it? Yes, he has. He's such a clean striker of the ball. Gets a boundary just short of the boundary ropes. These are big boundary ropes as well. Dikshant saw enough. It's a crucial juncture. one, It's about It was bowling, pitched further up. dot deliveries. Goes big. That really well. Dikshu goes big. Fetches Has a he got all boundary of for it? himself to get off the mark. Goes again. This was aerial. This was intentional as well. This is one more. Back-to-back boundaries. Another good close to the over. Wicket coming off it. That was a mixed bag. 23 for 1. The Kingsway team after the end of the third. Really well. Ali Murtaza proving to be expensive. Has he In got the end. all of himself to Two get boundaries off the coming off mark? that over. And a wicket as well. You won't Goes mind that. again. This was aerial. This was intentional as well. This is So Kingsway, they're still positive. You know, they've lost a wicket. They've been given away. They've given an early jolt by the bowling. But they're not backing down. They're at it. That's the way they play. You know, this is T20 cricket. Just 20 overs up at your disposal. Once again, the player gets down on one knee, goes for the sweep, turns it away towards deep mid-wicket, gets another single. Aryan Jayal moves to 12. Ashish, he was expensive in his first over, went for 13 runs. Aryan Jayal going after him. Belted a boundary and a maximum of his bowling. Dikshant almost chops it back on. How close was that to the off stump? Travel quickly to the fielder. Dot delivery in the end. That was too close to cut it away. Once again, he's looking for that sweep shot because he knows that there's nobody at that backward square leg region. There's acres of spaces there. There's a fine leg who's within the circle. And once he gets past that man, it will be a boundary just like that. That's exactly what I was talking about. He was targeting that region. Dikshant gets another boundary, moves into double figures.
Well, if you're smart enough, you don't need brute force. You don't need to even play all those fancy strokes. You can get runs and plenty of them by playing proper cricketing strokes. That's exactly what Dikshant has taught us. He's batting on 12 of 8 deliveries. Ashish, even though he made a solid start with the ball, he's proven to be expensive. Another couple of deliveries to go in this over. Goes big, goes again. This time, another boundary towards cow corner. Has it gone all the way? Yes, it's clear the fence. That's a maximum. And that was just screamed. No real effort. It was pure timing. Look at that. Look at the connection. Absolutely sweet. That is a tremendous stroke. Final delivery of the over coming up. Uses his feet. Creams it away towards the offside this time round. A big over, massive over. They'd be really happy with that one. He's been milked for plenty of runs. And after the fourth, they are 38 for 1. They are taking on the spinners, both the left arm spinners now. पहले 4 ओवर्स की कहानी मिली जुली रही है। टीम किंग्सवे उन्होंने बनाए 38 रन। 17 स्पोर्ट्स को मिला है 1 विकेट। स्वागत है आप सभी दर्शकों का एम्प्रेस क्रिकेट लीग 2025 के एक और मुकाबले में। दीक्षु बहुत अच्छे अंदाज में अब तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। एक निराला अंदाज दिखा है उनका हमें बल्लेबाजी करने का। आर्यन जोयल उन्होंने 5 गेंदों में 12 रन बनाए हैं। चार ओवर 38 रन 1 विकेट। स्पिनर्स पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा दिखाया है टीम 17 स्पोर्ट्स के कप्तान ने। एक और स्पिनर शिवांक वशिष्ठ, पहली गेंद पर जगह बनाई बल्लेबाज ने। खूबसूरत शॉट, हवा में उड़ते हुए नजर आए कवर्स के खिलाड़ी हमें, लेकिन गेंद उनकी दाईं तरफ से जाएगी सीमा रेखा के बाहर। चौके के साथ आगाज हुआ है 5वें ओवर का। आर्यन जोयल का एक दिलकश स्ट्रोक, प्रेशर गेंदबाज पर। थोड़ा सा रिस्क लिया था, स्टंप्स दिखाए थे गेंदबाज को, लेकिन रिस्क है तो रिवॉर्ड है। दौड़ता भागता टीम किंग्सवे का स्कोर पहुंच चुका है 42 तक। आर्यन जोयल वो भी लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। शिवांग वशिष्ठ इस बार आगे निकले। आर्यन जोयल सीधे गेंद को खेला मिड ऑफ की तरफ। 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ऐसा लगा जैसे शायद एक बार फिर से आर्यन जोयल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाएंगे, लेकिन अपने निर्णय को आखिरी टाइम पर आकर बदला। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई दीक्षु के सामने पहली बार शिवांक। स्वीप लगाने की कोशिश, जोरदार अपील, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शिवांक, लेकिन अंपायर ने मना किया। नॉट आउट का इशारा अंपायर का। शिवांक उनको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि अंपायर ने नॉट आउट दिया है। एक अच्छी वापसी कही जाएगी ये। बल्लेबाज कोई भी हो, अगर उनके पैड पर बॉल लगती है तो उनके आत्मविश्वास को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट पहुंचती है। इस बार थोड़ी सी पीछे गेंद रखी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, 1 रन तेजी से दौड़कर पूरा किया,
लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़ कर आए गेंद तक और मात्र 1 रन लेने की अनुमति दी दोनों बल्लेबाजों को। कोशिश कर रहे थे दोनों बल्लेबाज कि अगर बन जाए काम तो कंप्लीट कर लिया जाए दूसरा रन, लेकिन वहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने मौका नहीं दिया। एक बार फिर से शिवांग वशिष्ठ, इस बार भी पहला रन तेजी से पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में बॉल गई। दोनों खिलाड़ियों ने दूसरा रन पूरा करने के लिए दो कदम आगे निकाले थे, लेकिन बैक गियर डालकर पॉपिंग क्रीज के अंदर भी आ गए। फिर एक अच्छा ओवर अब तक ये शिवांग का। पहली गेंद पर चौका आया, लेकिन उसके बाद ज्यादा रन्स कंसीड किए नहीं है। इस बार भी सिर्फ 1 रन ही मिलेगा, तो एक इवेंटफुल ओवर रहा ये। एक चौका आता हुआ नजर आया इस ओवर में हमें, उसके साथ साथ एक बड़ी अपील भी देखने को मिली थी, जहां ऐसा लग रहा था कि शायद बल्लेबाज खतरे में है, लेकिन बच गए थे वो। और उसके अलावा कुछ सिंगल डबल भी हमें देखने को मिले। The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down. पांच ओवर्स मुकम्मल, टीम किंग्सवे 45 पर 1। पहला विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक तेज गेंदबाज आए हैं। और फील्डिंग की अगर हम चर्चा करें तो ऑन साइड पर आपको उतनी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। एक खिलाड़ी दायरे के बाहर लगाया गया है पावर प्ले के इस आखिरी ओवर के लिए। डीप स्क्वायर लेग पर आपको वो खिलाड़ी देखने को मिल जाएगा। और वहीं देखा जाए विकेट्स के पीछे तो आपको फाइनल और थर्ड मैन पर दायरे के अंदर एक एक खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। मिड ऑन पर भी एक खिलाड़ी है, तो 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर, बाकी सभी खिलाड़ी ऑफ साइड पर। पहली बॉल पावर प्ले के आखिरी ओवर की, डाउन द लेग साइड। लॉफ्ट करना चाहते थे उसको, लेकिन गेंद काफी दूर बल्लेबाज से। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन टीम किंग्सवे के खाते में। अंकित नरवाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो पावर प्ले में बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हमें कप्तान 17 स्पोर्ट्स के। हवा में गेंद को खेला है, इनफील्ड को क्लियर किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन अंत में होगी गेंद की जीत। 4 रन मिलेंगे टीम किंग्सवे को और इन 4 रनों के साथ ही 50 भी पूरे हुए टीम किंग्सवे के। ऑन दी अप, जानते हैं पावर प्ले चल रहा है, सिर्फ इन फील्ड को क्लियर करना है और रन्स बटोरने हैं। इस चौके के साथ दिक्षु पहुंच गए अपने व्यक्तिगत स्कोर 27 पर। ये मोमेंटम होल्ड करना होगा टीम किंग्सवे को। 17 स्पोर्ट्स, उनकी कोशिश होगी कि वो बहुत जल्दी निकालें दूसरा विकेट भी। ये अच्छी गेंद और उस गेंद को सीधे खिलाड़ी के हाथ में मारा दिक्षु ने। मजा आएगा ये कॉन्टेस्ट देखने में, नेक टू नेक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी खिलाड़ी इस मैदान पर आपको खेलते हुए इस टाइम नजर आ रहे हैं, सभी के सभी तजुर्बेकार खिलाड़ी, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अंकित नरवाल, उन्होंने वापसी की, चौका आया, फिर उसके बाद अच्छी गेंद स्टंप लाइन पर। इस बार गलती कर बैठे, बैट लाइन पर बॉल और उसको फ्लिक किया। 4 रन अर्जित किए लॉन्ग लेग रीजन से। ऐसी गेंदें अगर आप करेंगे तो दिक्षु को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी उन गेंदों को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने में। खराब गेंद, सही नसीहत। अंकित नरवाल वो नहीं पूछ पा रहे हैं ऐसे सवाल जिनके जवाब ना हो दिक्षु के पास। ये गलत गेंद।
लाइन और लेंथ पर कंट्रोल बनाकर रखना होगा गेंदबाज को, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो फिर रन्स बनाना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाएगा बल्लेबाज के लिए। शॉट खेलते ही दौड़े बल्लेबाज, आगे निकल आए थे और जिस मोमेंटम में आगे निकले उसी मोमेंटम के साथ दौड़ते दौड़ते पहुंच गए नॉन स्ट्राइकिंग एंड तक। 1 रन कंप्लीट किया। इस एक के साथ स्कोर हुआ 55, 55 विद फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आर्यन जोयल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी अभी तक देखने को मिली है हमें दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक करने की तरफ देखा सभी बल्लेबाजों ने। पहली गेंद से ही हमें ऐसा नजर आया कि रन्स ज्यादा बनाना चाहती है टीम किंग्सवे। एक और बढ़िया शॉट, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को थोड़ा सा दाईं तरफ बुलाया था गेंदबाज ने और वो चेंज देख लिया था बल्लेबाज ने। जैसे ही देखा कि डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ आया है, तुरंत गेंद को वहां पहुंचा दिया जहां पहले खिलाड़ी लगे हुए थे। यानी पूरी तरीके से देखकर, समझकर, परख कर खेल रहे हैं बैट्समैन। हर एक चीज दिमाग में बनी हुई है। ये बढ़िया बॉल थी, पूरी तरीके से वहां बीट किया बल्लेबाज को। अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर को कंप्लीट करेंगे अंकित नरवाल, लेकिन 14 रन कंसीड किए अंकित नरवाल ने अपने पहले ओवर से। 6 के बाद 59 पर 1 टीम किंग्सवे। भाई काम कर दो, ये लगा दो बस। ये बहुत कितनी देर में चालू होगा भाई इससे? 19 मिनट में हो जाएगा भाई। बस गरम, बस वो नहीं होना चाहिए। रेडी में को है। फिर आराम से रख दो, आराम से लगी हो, आराम से। बस रख दो, होने लगा। पावर प्ले समाप्त, यानी कि अब दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप कवर पॉइंट। 5 खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे दायरे के बाहर। शिवांक वशिष्ठ जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी। पहले ओवर से आए थे 7 रन और वो तब आए थे जब पहली गेंद पर ही चौका आ गया था, यानी कि अच्छी वापसी की थी शिवांक ने आखिरी 5 गेंदों में। पहली गेंद 7वें ओवर की, हल्के हाथ से खेला, टैप करके दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा तालमेल। 1 रन कंप्लीट किया, स्कोर को पहुंचाया 60 तक। किंग्सवे को एक सॉलिड स्टार्ट मिली है और अगर शुरुआत किसी टीम को अच्छी मिलती है तो फिर 200 प्लस बनने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आर्यन जोयल, उनके स्ट्राइक रेट में किसी प्रकार की कोई कमी आती हुई हमें नजर आई नहीं है। अभी भी आप देखिए 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार जगह बनाई, कट किया है बॉल को, डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, नहीं करेंगे कोई गलती। एक बार में गेंद को कलेक्ट किया और पहुंचाया विकेट कीपर तक। शिवांक वशिष्ठ स्टंप लाइन पर गेंदबाजी करने की कोशिश है उनकी और अभी तक पहली 2 गेंदों में वही करते हुए भी नजर आए हैं। इस बार थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी और उसको स्वीप किया है, लेकिन ऑन साइड पर प्रोटेक्शन है डीप में। एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज, उन्होंने कोशिश करी दूसरा रन पूरा करने की, लेकिन बढ़िया फील्डिंग फील्डर की। थोड़ा सा फंबल हमें देखने को मिला था, जिस वजह से दोनों बल्लेबाजों ने सोचा कि शायद दूसरा रन कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन दूसरा रन कंप्लीट करने का मौका नहीं था। एक ही रन। आगे निकले बैट्समैन, इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इंटरेस्टेड, लेकिन गेंद उनसे दूर। 1 बाउंस, 2 बाउंस, देन ओवर द बाउंड्री लाइन। एक बहुत ही क्लासिकल शॉट, टेक्निकली साउंड नजर आए अब तक आर्यन जोयल। थोड़ा सा रिस्क जरूर था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उस शॉट को कंप्लीट किया, अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया आर्यन जोयल ने। उम्दा बल्लेबाजी,
उच्च स्तर की बल्लेबाजी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आपको देखने को मिले हैं अब तक आर्यन जोयल और दिक्षु की तरफ से। इसी प्रकार की बल्लेबाजी सभी क्रिकेट प्रेमी देखना चाहते हैं और ये जो शॉट है ना बहुत मुश्किल है लगाना, लेकिन आर्यन जोयल ने जो नेट्स में पसीना बहाया है वो मेहनत अब काम आ रही है, वो मेहनत रंग ला रही है। शिवांग वशिष्ठ किस तरीके से करेंगे वापसी। 5वीं गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में, कोई रन नहीं। 7 आए थे शिवांग वशिष्ठ के पहले ओवर से, 7 आ चुके हैं अब तक शिवांग वशिष्ठ के दूसरे ओवर से भी, लेकिन एक गेंद अभी भी शेष। आखिरी गेंद शिवांग वशिष्ठ के दूसरे ओवर की। बड़ा शॉट लगाया सामने की तरफ, लेकिन ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला और ना ही ज्यादा दूरी। 8 रन इस ओवर से, 7 के बाद 67 पर 1 टीम किंग्सवे। The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, कुलदीप हुड्डा अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं टीम 17 स्पोर्ट्स के कप्तान। लगातार चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं गेंदबाजी आक्रमण में। नाउ कुलदीप हैज कम इनटू द अटैक। आर्यन जोयल रहेंगे स्ट्राइक पर। पहली बॉल 8वें ओवर की, कट किया, विकेट कीपर का एक शानदार कैच, कमाल का कैच। अपनी दाईं तरफ उड़ते हुए नजर आए हमें विकेट कीपर और आर्यन जोयल। वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि ऐसे कैचेस कभी कभी पकड़े जाते हैं। 8वें ओवर की पहली गेंद पर नाम लिखा था आर्यन जोयल का। विकेट मिल चुका है कुलदीप हुड्डा को अपने स्पेल की पहली गेंद पर। व्हाट अ कैच, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। जितनी तारीफ करें उतनी कम। फैंटास्टिक स्टफ बिहाइंड द विकेट्स विद द ग्लव्स बाय द विकेट कीपर। 67 for 2। कुलदीप हुड्डा को जिस काम के लिए लाए थे वो काम बखूबी पूरा किया है कुलदीप ने। विकेट निकाला अपने स्पेल की पहली गेंद पर। 67 for the loss of 2 wickets। आर्यन जोयल टगआउट में वापस। भाई नींद आ रही है बार बार। the mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. अभिनव आए हैं आर्यन का स्थान लेने। ओवर की दूसरी गेंद काफी ज्यादा नीचे रही और गेंद की तरफ दौड़े गेंदबाज, ऐसा लगा कि शायद गेंद को रोक लेंगे लेकिन निकल गई गेंद पीछे। सिंगल के साथ अपना खाता खोला अभिनव ने। दिक्षु वो अब एक वेल सेट बैट्समैन आपको देखने को मिलेंगे बीच मैदान पर।
विकेट पर। ओ एक और बढ़िया गेंद कुलदीप की, लगातार बढ़िया गेंदबाजी। ज्यादा मौके नहीं दिए हैं कुलदीप ने इस ओवर में अब तक बल्लेबाजों को। चौथी गेंद ओवर की, इस बार फिर से विकेट कीपर उड़ते हुए नजर आए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। रन्स मिलेंगे इस गेंद पर अभिनव को और टीम किंग्सवे को। डाउन द लेग साइड बॉल, विकेट कीपर की पुरजोर कोशिश, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन तक। शायद ऐसा लगता है कि धाई पर लगकर गई है बॉल, लेकिन वहां बाहर का मानना है कि शायद बल्ले पर लगकर गई है, तो बल्ले पर ही लगी होगी। सीधे बैट से शॉट खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन प्राप्त किया। ये बढ़िया ओवर अब तक रहा है कुलदीप का, इवेंट फुल ओवर रहा है अब तक कुलदीप का। 1 बाउंड्री, 1 विकेट, 3 सिंगल्स, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। दीक्षु अब जरूर एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे नए बल्लेबाज के साथ। आगे निकले, बढ़िया शॉट लगाया, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी से मेहनत करवाई जाएगी और 4 रन प्राप्त किए इस गेंद पर। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अपनी बाईं तरफ दौड़े, लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ रहेंगे। गेंद उनसे बहुत दूर। खूबसूरत ये शॉट, आगे निकलकर डाउन द ट्रैक आए और उसके बाद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला ये शॉट। आउटफील्ड बहुत तेज है। गेंद इस मैदान पर वैसे ही दौड़ती है जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां। 8 ओवर्स के बाद 78 पर 2 टीम किंग्सवे। तो यहां से अब अगले कुछ ओवर्स के लिए आपके साथ जुड़ेंगे राहुल जी। राहुल जी, स्वागत है आपका। Thank you so much, Aman, for that warm welcome. So, right in the nick of time, the men in pink picking up an important wicket. The dangerous Aryan Juyal, just when he was looking to be ominous, he's been sent back packing. But Dikshant is well set out there. He's batting on 39. Abhinav ran up. He's walked out. He's set the ball rolling straight away. These are the middle overs. These overs will be crucial. That's a top edge. He's lucky to get away with that one. That just ballooned up in the air. Wasn't in total control. I'll tell you what, it wasn't too far away from the fielder stationed at short fine. Now, this is the dreadful part of any left-hand, right-hand combination. As a bowler, as a fielder, uses his feet to great effect, but there is protection out there. Sweeper cover patrolling the boundary ropes, keeps it down to just 1. So the score moves to 80 for 2. This is a problem when you're batting first. This is the only problem, rather, in the middle overs. You don't know what a pace to maintain. They just lost a wicket. And for starters, the current run rate isn't the worst. Ajay probably might be the most experienced campaigner in this B1 sports team. Slightly shorter in length. Dikshant heaves it away towards the onside. He started well, has Ajay. He's given away just 4 runs. He's bowled 5 deliveries. He's got to finish it off well. That would be important. He's coming around the wicket to the left-handed batter, Abhinav Tej Rana. Final delivery. Goes big. That's aerial, but hasn't got all of it, just losing his shape. Will they come back for the second? They decide against it. Great fielding. He was very vigilant. Came in running. That is a very economical over. Just 5 runs coming off it. 9th gone. And Kings, they're 83 for 2.
the mind. It is our master, the master of our destiny, the way we live. And the men in pink, they sure will be on top. Meanwhile, this medium pace up, he's been effective. Kuldeep Hooda, he's picked up a wicket, a crucial one at that. He was taken away for 11 runs in his first over, but he's been effective. You can't deny that fact. That's away from the fielder. Will he get there? He does. Keeps it down to just one. Moves up to his left. Gets around the ball very quickly. Gets rid of it quickly too. Kuldeep Hooda, he's a prime T20 bowler. He's got a lot of varieties. He's got a whole pack of it. Plays it square. Almost drives it towards a cover in the end. The intention was to play it square. In the end, works it towards the cover region. Gets another single, and Abhinav Tejrana is back on strike. Now, you see constant shuffling when it comes to the field. Even the bowler won't have it easy because the lines change. Oh, that's a wicket. That is a wicket. That's right through the gates. Kuldeep Hooda has picked up another big one. You know, I was talking about the difficulty of adjusting your line to a left-hander. But not Kuldeep. Probably now you've got that left-hander out of the equation. He would be really dejected with that shot. In the end, proved to be a nothing shot. Right through the gates, crashing in onto the stumps. That's exactly what I was talking about. Another wicket here, and the men in pink would be on top. This is some bowling. Kuldeep, he knows his limitations. He's somebody who sticks to his strengths, doesn't waver around too much, doesn't play around too much, just sticks to his strengths, bowls it within the channel, doesn't offer the batters any pace as such to work with. Smart operator. So the number 5 batter will walk out to the center. Bhanu Pania coming in at number 5. He replaces the left-hander. Kuldeep Hooda, meanwhile, he's on song. He's got a task at hand. You know, there was a partnership brewing up. And just in the nick of time, Kuldeep has got rid of the well-set left-handed batsman. That one staying slightly low. And the batter adjusting it, but finds the fielder nevertheless. Abhinav looked to be positive from the onset. Once again, staying just a tad low. He pushes it towards covers. Gets a dot delivery in. Fine over. Brilliant over. Wicket coming off it at the halfway mark. The Kings, they're 86 for 3. Just 3 runs, would you believe it, has come off that over. Kuldeep Hooda has been so effective in the middle overs. That's exactly what you want. You know, as we were talking about in the previous game as well, divisive phases of the game. You know, the power plays, the middle overs, the back end overs, the death overs. You've got to plan accordingly, and you've got a bowler for every occasion. And Kuldeep Hooda seems to be that bowler who'll control the innings in the middle, provide the important breakthroughs as well. And, you know, once again, coming back to the team combination,
of B1 Sports. It's interesting the way they go about things. Ali Murtaza and Ashish Suhag, the left arm orthodox spinners, they started off proceedings with the new ball. Unusual, but it worked in their favor, I must tell you that. Ali Murtaza in particular was very economical, gave away just one run. The skipper, meanwhile, bringing in his second over. Ajay gave away just 5. Yesterday we were talking to him in the evening, and he was all set for the game. He was confident. Almost gets a wicket. Almost does. Gets down low. Dikshant goes for the sweep. Well, he's a wily old fox, is Ajay. And coming back to the fact that he seemed really confident, and there was a grin on his face. He's definitely got a trick up his sleeves. Rocks back onto the back foot, slashes it away, but there is protection. Sweeper cover tends to it, keeps it down to just 1. Another single taken. So sweeper cover protecting the boundary ropes. There's a man at long off. There's a man at long on as well. There's cow corner, and there's deep mid wicket. Fine leg is inside the circle. So is third man. Works it away towards the onside. He's found the gap. Will they push for the second? They do. That's excellent running between the wickets. Good understanding. Very swift. The moment he hit it, he knew it hit in the gap. And he called for 2. Bhanu moves to 4. It's that length. It's that tricky length where you quite don't know if it's short enough to be put away. Don't even understand if you've got to get on the front foot. You could be trapped if you get on the front foot of that particular length. Goes for it. Goes for the pull. Has he found the gap? He has. The fielder comes around, but he can't get there. He can't get down in time. That's 4 more runs for Dikshant. Moves to 47. And ends the over with a boundary. So good over, decent over for the batting team. 11th gone. And the Kings, they are 95 for 3. They're approaching the 3-figure mark. So 11th over done and dusted. Kingsway. Once again, you can see a partnership is brewing between these two right-hand batters. Bhanu is new at the crease, but seems like he's spent some time out there in the middle. Plays it nicely. That one once again coming in with the angle, adjusts late. Just leaning his body towards the onside, makes enough room for him to push it towards the offside and get a single. Bhanu moves to 6. Ali Murtaza will be bowling his third. He was sensational in the power plays. Goes for the sweep. Gets another single. 1 more run added to the total. So these two, they have decided that they won't be taking too many risks at the moment. And Ali Murtaza won't give you any dollies, won't give you easy runs as well. He's a very smart operator, as I said, vastly experienced. Loves this format of the game. He loves every format of the game as a true cricket fan. And he goes big. That could be a wicket. Oh, almost a wicket. Almost a wicket. He's put it down. He did all the hard yards in.
reaches up to it, and in the end couldn't grasp it. He's put it down. That could be a costly miss. Getting away with that one. And have they come back for the second? A single taken. So just a single taken on that occasion. 99 for 3. Bhanu just turns it away. Neatly done. Gets a single. And 100 up for the Kingsway team with that single as well. 100 up in quick time. And I reckon that is the end of the over, I believe. It is. So 101 for 3 after the end of the 12th. 8 more to go. The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have. ये वहां पर चलिए प्रयास किया गया था, लेकिन फील्डर के ऊपर से निकल गई बॉल। 1 रन और मिल जाएगा टीम किंग्सवे को। 103 हो चुका है स्कोर किंग्सवे का। अजय कप्तान टीम के, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है अब तक गेंद के साथ। इस बीच एक बहुत तेज तर्रार शॉट, काफी ज्यादा तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वहां पर हमें गेंद और बाउंड्री लाइन के बीच में फील्डर आते हुए नजर आएंगे। एक और सिंगल, एक और बार स्ट्राइक रोटेट होगी। दीक्षु स्ट्राइक पर, और इनके ऊपर रहेगी जिम्मेदारी अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की। स्वीप लगाया है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनसे बहुत दूर ये गेंद डीप मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास बॉल गई। स्क्वायर ऑफ द विकेट्स। अगर थोड़ा सा और खेलते तो शायद 1 से ज्यादा रन्स मिल सकते थे दीक्षु को। अजय ने भी कमाल की गेंदबाजी की है, कप्तान ने बढ़िया कार्य किया है। ज्यादा पेस नहीं दे रहे हैं और ना ही कंधे का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्र गेंद को छोड़ रहे हैं और गेंद ज्यादा उछलती हुई हमें नजर आ नहीं रही। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। एक और बढ़िया ओवर अजय का। 13 ओवर्स के बाद टीम किंग्सवे 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 42 और गेंदें बाकी है। प्रोजेक्टेड स्कोर 163 नजर आ रहा है। एक लो स्कोरिंग थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends.
this power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the tough. तेरे ओवर से 106 पर 3 टीम किंग्सवे। अली मुर्तजा गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहले 3 ओवर्स में मात्र 16 रन कंसीड किए, विकेट भी निकाला एक। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, क्लीन स्ट्राइक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। वेलकम बाउंड्री फॉर टीम किंग्सवे। काफी देर से इंतजार कर रहे थे टीम किंग्सवे के समर्थक इस प्रकार के एक शॉट की तारीफ के लिए, वो तालियां बजाने के लिए। बहुत ही प्यारा ये शॉट। भानु को कॉन्फिडेंस देगा ये शॉट। बिल्कुल बल्ले के मिडिल ऑफ द बैट की जो बात करते हैं ना हम, वहां गेंद टकराई आकर। अली मुर्तजा इस बार गलती कर बैठे, हाफ वॉली कर बैठे और स्वीकार की वो हाफ वॉली बल्लेबाज ने। पहली गेंद पर मैक्सिमम लगाया अली मुर्तजा। उन्होंने 3 ओवर्स में 16 रन दिए थे, लेकिन 3.1 में अब 22 दे चुके हैं। पहली गेंद पर आगे आए 6। दूसरी गेंद पर भी बल्ला घुमाया बैट्समैन ने, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं। स्वीपर कवर की तरफ गेंद गई, 1 रन मिला भानु को। क्या दिक्षु अपना शतक पूरा कर सकते हैं? आई थिंक अभी तक हमने किसी भी मुकाबले में किसी भी बैट्समैन को 100 लगाते हुए नहीं देखा। बहुत सारी हाफ सेंचुरीज हम विटनेस कर चुके हैं। पहली हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट की आई थी आयुष बदोनी के बैट से। आगे निकले बैट्समैन, एक और बढ़िया बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ, गेंद को खेला, रन आउट का चांस। स्ट्राइकिंग एंड की तरफ एक क्विक थ्रो चाहिए था, लेकिन गेंद की गति थोड़ी सी कम नजर आई हमें, थ्रो की गति थोड़ी सी कम नजर आई हमें, जिस वजह से बल्लेबाज सुरक्षित जारी रखेंगे अपनी बल्लेबाजी। बाल बाल बचे, तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी हमें देखने को मिली। एक और बार फ्लाइटेड बॉल, बिल्कुल ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं अली मुर्तजा। दिक्षु पिछली 3 गेंदों में एक भी रन नहीं ढूंढ पाए। पहली गेंद पर 6 आया था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद वापसी हमें देखने को मिली है अली मुर्तजा की। आखिरी गेंद पर एक मौका बना था जिसको विकेट में कन्वर्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रयास अच्छा किया फील्डर ने। सिंगल आएगा ओवर की आखिरी गेंद पर। अली मुर्तजा का स्पेल मुकम्मल। 4 ओवर्स में दिए उन्होंने 24। 14 के बाद 114 पर 3 टीम किंग्सवे। 163 है प्रोजेक्टेड स्कोर, और 160 के ऊपर अगर निकल जाती है टीम किंग्सवे तो एक ऐसा स्कोर रहेगा जहां तक पहुंचने में टीम 17 स्पोर्ट्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मशक्कत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। किंग्सवे का जो बॉलिंग अटैक है वो भी काफी स्ट्रांग है। उसी चीज को मद्देनजर रखकर मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन 17 स्पोर्ट्स के पास बल्लेबाज अच्छे हैं।
सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है स्टार्ट। सेकेंड इनिंग्स में अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है किसी भी टीम को तो वो फिर किसी भी टोटल को चेस कर सकते हैं। किनारा लगा थर्ड मैन पर, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद, जाएंगे गेंद की तरफ और एक रन इस गेंद पर आएगा। एक 115 पर 3 किंग्सवे। भानु, उन्होंने पिछले ओवर की पहली गेंद पर एक 6 लगाया था लेकिन उस ओवर को कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे बैट्समैन। भानु ने इस बार डाउन द ट्रैक आकर डाउन द ग्राउंड लगाया ये शॉट और प्राप्त किए 6 रन। उन्होंने अपने गियर्स चेंज कर लिए हैं, एक्सेलरेटर पर अब पूरी तरीके से अपने जो पैर हैं वो रख दिए हैं भानु ने। पहुंच गए अपने व्यक्तिगत स्कोर 24 पर। उम्दा शॉट, उच्च स्तर की बल्लेबाजी, गेंद की लेंथ तक पहुंचकर अपनी बाजुओं की जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया भानु ने। 6 ऑन द सेकंड बॉल ऑफ दिस ओवर। अजय अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। पहले 3 ओवर्स में ज्यादा रन कंसीड नहीं किए थे लेकिन इस ओवर को बल्लेबाज बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। टेरिफिक वर्क, इनक्रेडिबल शॉट, इनक्रेडिबल स्टफ। दीक्षु काफी देर से विकेट पर हैं, पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। एक और बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील वहां पर हमें देखने को मिली। अंपायर उस अपील से ज्यादा खुश नहीं हुए। हवा में बॉल, लेकिन नो मैंस एरिया में गिरेगी गेंद। बाउंड्री लाइन से पहले रोकेंगे क्या फील्डर? कोशिश अच्छी, सफल भी रहे गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले रोकने में। 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अजय लगातार फील्डिंग में बदलाव करते हुए कप्तान, उन्होंने डीप कवर पॉइंट के खिलाड़ी को कहा है कि आप डीप एक्स्ट्रा कवर पर आ जाइए। 1 2 3 पर 3 टीम किंग्सवे। पारी का 15वां ओवर चल रहा है, अभी तक 9 रन इस ओवर से। काफी नीचे रही है गेंद, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप ज्यादा शोल्डर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप गेंद को नीचा रख सकते हैं और बल्लेबाज को कम चांस मिलेगा बड़ा शॉट लगाने का। कुलदीप ने भी यही किया, वो उंगलियां फेरते हुए हमें नजर आए। लगातार वेरिएशन उनकी तरफ से हमें देखने को मिला, इसी वजह से उन्होंने 2 विकेट्स निकाल लिए हैं। अभी तक काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी उनकी तरफ हमें देखने को मिली। एक ऑफ लाइटेड बॉल, हॉरिजॉन्टल बैट के साथ उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की, अच्छा ग्राउंड कवर किया, काफी तेजी से गेंद की तरफ पहुंचे और फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद को कलेक्ट किया। मात्र 1 रन अजय के स्पेल की आखिरी गेंद पर। 4 ओवर में दिए अजय ने 30 रन, विकेट लेस रहे। 15 ओवर्स के बाद किंग्सवे 125 3 विकेट के नुकसान पर। 2 सेट बैट्समैन बीच मैदान पर है, यानी कि एक बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं आप। आखिरी 5 ओवर्स में 60 से 70 रन बनाने की कोशिश करेगी टीम किंग्सवे और कोशिश करेगी 180 190 के आसपास पहुंचने की। आज के दिन का पहला मुकाबला हमने देखा, वहां पर टीम हमदान हरिकेन्स, उन्होंने 219 रन बनाए थे। फिर सेकेंड इनिंग्स में गेंद काफी ज्यादा टर्न होती हुई हमें नजर आई। कई बार हमें वो अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला जो बल्लेबाज को अमूमन परेशान करता है और उन्हीं सब कारणों की वजह से टीम एबी राइजिंग क्रिकेट एकेडमी को लगातार अपने दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ पिच नहीं, वहां पर गेंदबाजों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, गेंदबाजों ने भी बढ़िया कार्य किया। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये डीप में खिलाड़ी मौजूद है, इंटरेस्टेड है, लेकिन गेंद उनके ऊपर से तैरती हुई जाएगी हवा में, बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही शानदार स्लॉग स्वीप, एरियल रूट अपनाया और प्राप्त किए 6 रन पहली गेंद पर दीक्षु ने। कैलकुलेटिव रिस्क, जानते हैं दीक्षु कि उन्हें कितनी ताकत लगानी है 6 प्राप्त करने के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर थी बॉल, वहां से घसीट कर लेकर आए गेंद को, डीप स्क्वायर की तरफ खेला और 6 रन अर्जित किए। आशीष अपने तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं, अब तक बहुत महंगे साबित हुए हैं और उनकी गेंदबाजी
अब आपको थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल जाएगी बिकॉज विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया है दिक्षु का। एक वेल सेट बैट्समैन को आउट किया है आशीष ने। 61 रन बनाए दिक्षु ने और सामना किया मात्र 40 गेंदों का। एक सॉफ्ट डिसमिसल कहा जा सकता है इसको क्योंकि काफी छोटी थी ये गेंद और ऐसा लगा जैसे शायद एक प्री मेडिटेटेड शॉट खेला हो। जगह बनाई थी, पहले ही मन बना लिया था कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेलेंगे, लेकिन सही कनेक्शन नहीं। जो कनेक्शन हुआ था उसके बाद गेंद को सिर्फ लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ तक जाना था। गेंद गई लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथों तक और आशीष को मिलने वाली ये पहली विकेट। यहां से कम बैक करने का प्रयास करेंगे आशीष और अपने बॉलिंग फिगर्स को थोड़ा सा और सुधारने का प्रयास करेंगे आशीष। बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं, 34 रन कंसीड कर चुके हैं अपनी पहली 14 गेंदों में। अब देखने वाली ये चीज रहने वाली है कि क्या कप्तान आशीष को उनके चौथे ओवर के लिए बुलाएंगे। अगर बुलाएंगे तो आशीष कोशिश करेंगे कि वो अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरें। 131 के स्कोर पर चौथे विकेट का पतन। टीम किंग्सवे 131 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 15.2। रिपल पटेल एक और बड़ा नाम, ये भी जाने जाते हैं स्लॉग ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाने के लिए। रिपल पटेल क्या पहली गेंद से अटैक करने की तरफ देखेंगे या फिर थोड़ा सा समय लेंगे। पहली गेंद थोड़ी सी पीछे रखी गेंदबाज ने, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला रिपल ने और 1 रन प्राप्त किया। स्ट्राइक इसी के साथ होगी रोटेट। भानु, अब उनको जिम्मेदारी उठानी होगी लगातार बड़े शॉट्स लगाने की एंड ही विल ट्राई टू डू दैट। अभी तक ये जो बैटल हमें देखने को मिला है बॉल और बैट का, उसमें बहुत मजा आया है। बढ़िया गेंद, पूरी तरीके से बीट किया भानु को आशीष ने। ये अच्छा कमबैक है आशीष का। पहली गेंद पर मैक्सिमम, उसके बाद रिवेंज लिया, आउट किया दिक्षु को और फिर 1 रन और फिर डॉट बॉल। चारों खाने चित भानु नजर आए हमें ओवर की चौथी गेंद पर। 5वीं गेंद को भी सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला बल्लेबाज ने और मात्र 1 रन ही आएगा। अब तक 8 रन इस ओवर से। आखिरी गेंद बाकी है आशीष के तीसरे ओवर की। प्रोजेक्टेड स्कोर में थोड़ी सी गिरावट हम देख रहे हैं, 168 नजर आ रहा है प्रोजेक्टेड स्कोर। इससे तो ज्यादा ही बनाने पड़ेंगे टीम किंग्सवे को क्योंकि इस समय जो कंडीशन है उतनी भी खराब नहीं बल्लेबाजी के लिए। वो 168 से ज्यादा रन्स बिल्कुल आपको बनाती हुई नजर आएगी किंग्सवे, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। 16 ओवर्स के बाद 133 रन, 4 विकेट किंग्सवे। The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. So Shivank Vashisht, he's coming to bowl the 17th over, the final 4. How many more runs can they get? That is a question. You know, they were going along nicely. At some point of time, they've been unsettled. This innings has derailed, but there is still hope. 6 wickets in hand, 4 overs to go. If they get somewhere in excess of 180, then we could be in for some chase. We could be in for some entertainment. This could be a gripping contest. This would be tight. Just a single on that occasion. As I stated, so far the spinners have ruled the roost. It's getting slower and lower as the days progress, as the matches progress. The pitches, they will be tired by the time we head into the business end of the tournament. Just one bounce straight to the fielder. Again to that long on region. Gets one more run. Singles won't do. Ripple Patel, we all do know
the impetus he can have on a game. He's destructive with both bat and ball. Excellent, tremendous stuff. That is stunning. Puts in the dive, moves to his right really quick. The ground fielding has been exceptional. And that really rubs on to the confidence of the bowler. You know, when he's giving it 100%, he sees that the fielders are in it with him. So if he's a spinner, he will give that extra rip. Nicely bowled once again, thoughtful. Turns it away towards the onside. Gets another run. Bhanu is the man who's got his eye in. He's batting on 30. He's well set. 2 more deliveries to go. Shivank has bowled well so far this one. 4 singles of the first 4. He goes big. That's sat up well. That's been dispatched. That's gone all the way. Much needed maximum. Well, he was waiting all along for it, Bhanu. He gets what he desired and puts it away for a maximum in grand fashion. Bhanu was waiting for it all along. At some point of time, it had to come. Pulls it slightly short, this time fuller in length. Goes after it, drills it towards long off. Will get a single. He will keep strike with that single. A maximum coming off that over. 11 runs coming off it. That's the end of the 17th. 144 for 4 Kingsway. 3 more overs to go. Once again, as I stated, they'll be looking around that 180 target. And 180 definitely seems to be on the cards as well, until and unless they bowl some brilliant death overs. The men from B1 Sports, I beg your pardon, rather 1-7 Sports. The bowler running in is bowled well. He could get another wicket here. He does. That's a fine catch. Standing at long on, running in. And the medium pacer picks up his third. He's had a fine day with the ball in his hands. A batsman, well, he had to go for it. Advances down the ground. Heaves it, but finds the man. Position there. Makes it look so simple, makes it look so safe. Nicely pouched. They needed that wicket. Kuldeep picks up his third wicket. And it's a well set Bhanu against the run of play. He has to walk back. The new batter will walk out to the center at number 7. So Akhil Singh Rawat is the new man who walks out to the center, coming in at number 7. Ripple Patel, meanwhile, is at the non-striker's end. So the new man, Akhil Singh Rawat, will be facing his first delivery. Kuldeep to continue. He's bowled so well. He's mixing it up nicely, varying his pace. He's kept the batters on a leash. Akhil off the mark with that single. It's a Ripple back on strike.
What a spell this has been. He came in the middle overs. Kuldeep, as I said, he sticks to his strengths, bowls wicket to wicket, varies his pace accordingly, keeps the batsman at bay, keeps him at check. He started off well. These death overs, in all probability, will be bowling another one. That is the final over of this innings for sure. He's got to do it. I don't see any better man on the field at the moment in this team to bowl that final over. Why not when he's got another over up his sleeve? Bowls it slower through the air, runs his fingers along the ball. The batsman turns it away towards the onside, gets another single. Ripple, the man on strike, he'll go big. He tonks it straight down the ground, but up. He does well, does Kuldeep. Gets his body on the line. Anything for the team. Saved a definite boundary there. Will they get to that 180 run mark that we were talking about? Oh, they'll be very disappointed if they don't get there. Oh, that's shot. That's smoke through the offside. That's smoke through covers. That's what Ripple Patel can do. Gets a boundary. Spoils that over for Kuldeep and the bowling team. End of the 18th. 150 up as well for the batting team. They're 151 for 5 after the end of that over. Just a hint of width. He was waiting for it all along. Absolutely smokes it towards the extra cover region. So the final 2 overs would be interesting to see who will be bowling the penultimate over. Is it going to be a spinner? It is a spinner rather. That is fairly surprising. Jersey number 20 will be bowling the penultimate over. Akhil Singh Rawat will be on strike. He'll be facing the first delivery of this penultimate over. Ripple Patel showcasing what he can do. He's at the non-striker's end. Well, he's faced a few deliveries. And now's the time. If he unleashes, we could be very well looking at a very big total. The left arm spin up. Bowls it quick. Bowls a straight one. Akhil Singh Rawat gets a single. Ashish Suhag has been expensive today. He'll be bowling his final. 6 bowling options used by the men in pink. Short, but not short enough. He'll find the fielder standing at long on. The call is for 2. They put the pressure on the fielder. Oh, that's a direct hit from long on. How is that possible? That is magical stuff. And it has been sent upstairs. The third umpire comes into action for the first time today. And it's a brilliant piece of fielding. Looked like he had made it comfortably back. But the throw came in sharp from long on. Waiting for the verdict from the third umpire. They're checking it upstairs.
Nag, we finally come to the verdict that is just about made it. What an effort that was by the man at long on. Scintillating stuff. Brilliant throw. Goes again, goes straight. This could go all the way. It does. It does. Straight down the ground. Right where the players were sitting in the dugout. Ripple Patel. He's creating ripples within the pink camp. Now they look to be on course for that 180 plus score. Ripple Patel goes to 16 of 9. Well, we all know he's a dangerous customer. Ashish Suhag, I was really surprised when he was given the ball, that too in the penultimate over, because he hasn't had a good day. He's a very good bowler, make no doubt about it. The kind of day he's had, not the best of days he's had with the ball. Comes back strongly with a dot delivery. That's excellent. That is excellent stuff. Bangs it slightly in short, and that one stayed low. Takes the off pole. Ripple has to depart. Coming in with the angle. He saw what the batsman was trying to do. He knew he was coming down the ground. Pulling his length back. He's done a fine job. Ashish Suhag has picked up another wicket. Even though he's been expensive, he's picked up 2 crucial wickets. So jersey number 16 is the new man. He'll be facing the final delivery of the penultimate over. Shivam Sharma, the man. 6 wicket down of Team Kingsway at 160. 160 for the loss of 6 wickets Team Kingsway after 18.5 overs. So Shivam Sharma, he'll be facing his first, and the message from the dressing room would be clear: to go all loud at it. He'll look to swing it big. He uses the long handle to great effect. So final delivery. Ashish Suhag, he'd be slightly happy with that wicket that he got in this over. Yes, he's been expensive, but that was a crucial blow. Plays nicely, plays it towards the extra cover region off the mark, will keep strike. An eventful over that one. A wicket coming off at 19th gone, and Kingsway, they're 161 for 6 with one more over to go in this innings. After 90 overs, Team Kingsway 161 for the loss of 6 wickets. So there shouldn't be any doubt about who would be bowling the final over of this innings. It will be Kuldeep Hooda. He's had a good day at the office, as Kuldeep Hooda has picked up 3 wickets. His economy has been 7. He's given away 21 runs. He'll be bowling his final over. Can he close it well? That is a question. Kuldeep on top of his bowling mark. He'll be bowling to Shivam Sharma, the new man, first up. Now Shivam, as I said, is somebody you can use up the long handle to good effect. He'll be looking to go big. He does. Goes flat towards long on. One bounce straight to that man. Just a single. Shivam Sharma moves to 2. With that single, Akhil Singh Rawat. He's back on strike. Akhil Singh Rawat batting on 3. He's faced just 3 deliveries. Swing and a miss straight to the keeper. This is good stuff. Changing his pace.
bowling well. These are good lines. He's keeping it tight, just like he has since the start of this game. Very decent spell this. If he picks up another wicket here in this over, would be wonderful. Under edge, slower delivery. That was very slow. Almost crawling up to the batter. He waited for that an eternity. Did Akhil Singh Rawat. 3 deliveries, just 1 run. In the block hole, Yorker length delivery. Picks it off his pads. Gets a single. And Shivam back on strike courtesy that single. Final 2 deliveries. Shivam will be facing the penultimate delivery of this innings. Kuldeep, he's bowled well. He's been good. He's been on song. Once again, Fuller in length in the block hole. They come back for the second. Could be a run out here. Is he short? Yes, he is. That's another wicket. Well, he was always going to struggle. And in the end, the bowler he had it easy. So another wicket falling. Not that it matters much because the run out was affected at the non-striking end. So it will be Shivam who's still on strike. 1 run counts. So 164 is what they have on the board. Jersey number 8 will be coming out there. He'll be at the non-striker's end though. He's got only one job, and that is to run as fast as he can. Final delivery of this innings. Kuldeep coming in. That's aerial. That hasn't gone all the way. Long on, should cut it off. He'll keep it down to just a single. So single to finish proceedings. So what they have on the board is 164. I believe that has to be 165, I reckon. Not sure. We'll check with the scorer. But at the moment, as it stands, 1-7 Sports, they require 165 in their quota of 20 overs. Should be an interesting run chase this. The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you become.
And with that mindset, you are unstoppable. The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you become. And with that mindset, you are unstoppable. The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all the mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When
when the odds are stacked against you. It's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. The mind. It is our master. So out come the players to the center. 165 will be the target for 17 Sports. Kingsway, when they started off, it seemed like 200 plus was a given. Also considering the history of this ground and the history of this tournament, 200 plus was of course a given. Shiva Mavi will be opening the bowling. So Ankit Kumar and Nitish Reddy, they walked out to the center. Ankit Kumar is a man on strike. Shiva Mavi steaming in. First delivery, right on the money straight away.
right on top of that off stump. Gets behind the line of the ball. Ankit Kumar plays a dot ball, pushes it towards the offside. No chance of a run. And I was talking about the fact that 165 is what it's needed. The men in yellow somewhere down the middle lost track. Otherwise, 200 plus was a certainty. They'd be disappointed that they didn't even get 180 runs on the board. That's clipped away off the leg side. Nicely played, and gets a boundary. They are up and running with a boundary. 4 runs. That's Nisi tucked away off his pads. Ankit Kumar off the mark. And Shiva Mavi bowling straight up on the pads of the batter. Nicely clipped away. Nicely done. That's a good start. That will give him a lot of confidence. Shiva Mavi once again steaming in to the left-handed batter. He was looking to guide it away towards that gully region. Straight to the wicketkeeper. Quick delivery, pacey delivery. He's nippy. He might not be express, but he's very nippy. Delivery straight in gloves off the wicketkeeper. Remember, 6 overs, power play overs, 2 fielders outside 30-yard circle. Shiva Mavi. One thing is for sure, he'll stick to a very good line and length, but not on that occasion. Straying slightly, puts it away. That's a big shot. That's a massive stroke rather. Ankit Kumar gets a maximum, the first of this innings. Brilliant hit. Picks it up and tonks it. Nicely done. This is a confident start from the men in pink. And it's good to see these vibrant colors on the pitch. You could be really bored when you see all those dark colors on a cricket pitch. These lighter colors make it look more vibrant. The yellows, the pinks. That's a relief. That's a breath of fresh air. Reddy. He has a word with his partner, Kumar, probably asking him to take it slow, not to take too many risks as well. Because they've got to a very good start. This is a positive start. 2 more deliveries to go, and you're taking on somebody of the caliber of Shiva Mavi. You've got to keep that in mind. International cricketer, has represented the nation. Shiva Mavi would be hurting. He decides to come around the wicket. Ankit Kumar will be raring to go. Those 2 deliveries, those 2 shots will give him a lot of confidence. Guides it away towards the third man region. He was finer. He plays wide of him. That's 4 more. That's another boundary. Nicely done. Nicely put away. Very well. Another boundary. 3 hits to the fence. 4 more runs. 1 was a maximum. 1 was a boundary. Shiva Mavi under the pump. How often do you see that? Shiva Mavi? He's been plundered for 14 in his very first over. He was looking to go big. That could be close. No signal from the umpire. And to make things from bad to worse, that's gone for 4. Definitely will be leg byes. So as many as 18 runs coming off that first over. And OS are off to a flyer.
फोकस नहीं खा रहा Nitish Reddy. He'll be the man on strike. He'll be facing the first delivery. His first delivery, that is. Also the first delivery of the second over. The faster bowler. The left arm pacer coming into the attack. And straight away trapped in front. But I'm sure that can't be given out. Good decision by the umpire. He started off well as a left arm pacer. Nitish Kumar Reddy caught in his crease. Really well bowled. Rather, it's Nitish Reddy P. I beg your pardon. Ankit Kumar is back on strike. The left-hander. Left armour against the left-hand batsman. Sure enough. What a stylish stroke that is. It was almost like he had telegraphed it. He was waiting for it all along. Puts it away, sailing. That's 6 more. He's not holding back. He moves to 20. Does Ankit Kumar. That swivel. The elegance. He was so quickly onto it. So good to watch is Ankit Kumar. Also the fluency with which he plays that shot. 20 of just 7. Salman Khan running in again. Oh, that's depth. That's depth. He showed power. Now he's showing finesse. He's brought his A game to the table. How often do you see that? You know, he's not really made up his mind, but he's reacting to every single ball. That's what he's doing. When it's short, he goes for the big hit. He goes for the pull shot. When it's a ball fired in outside the channel, he just gives it enough direction. He knows the field inside out like the back of his hands. Salman Khan, meanwhile, he's running in again. Goes again, adjusts. But he could be hauled out. There's a man there. Oh, he's lost balance. He's lost balance there. He's done so well to get to it. But he realized that the ball might just go away racing towards the fence. He lost balance. And in the end, he's controlled that well. I think he's saved a few runs for his team. That would have been the catch of the tournament if he had held on to that one. But the power that he generated when he played that shot might just have taken him and the fielder along with it over the boundary ropes. So I think in the end, the right decision was made, and that is to push the ball within the boundary ropes. Smart thinking. See, when you've got microseconds to think about it, chalk out a plan and execute the plan, it's not easy. So a couple of runs taken. Ankit, compact, just pushes it towards the offside, gets a single. Gets Nitish Reddy back on strike to face the final delivery. Rather, it is the final delivery indeed.
Nitish, the man on strike, facing Salman. Salman bowling his final over. Once again dabs it late. This time Nitish, the man, guides it away towards the third man. Region gets a single. He will keep strike. That's the end of the second over. 33 for no loss. One Sports. देखो सही भाई, वो देखो ना बाहर से बॉल फेंक रहा था, क्यों रस्सी अंदर है मेरे भाई। दोबारा बैक करो। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, आप दिखा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। अब आप वो टच वाला काम नहीं बता पाएंगे। चलो ठीक है, क्रूशियल टाइम पे अगर साला 2-3 का मार्जिन रहता। So straight away, a spinner introduced into the attack. So the faster bowlers were plundered for runs, and they don't have a lot of runs to play with. And straight away, he delivers the goods. The spinner coming into the attack, and he's cleaned him up. Uproots the stumps. That's exactly what they in mind. The men in yellow wanted a wicket. They were off to a flyer. And Nitish Reddy has to depart. He goes for just two. Coming in with the angle, the wrong one. Nitish Reddy had no clue about that one. Dikshant scored vital runs with the bat. Now straight away into the thick of action with the ball in his hands. He was a top scorer in the previous innings. Such a vital cog in this team. Dikshant comes in at one down, scores crucial runs when the team is in dire straits. And now with the ball, he's come in, bowls the wrong one. And just when his team required a wicket, he's provided one. Well, if these two had stuck to their guns till the 5th or the 6th over, this game would have been finished probably by the 15th or the 16th over. In the nick of time, Dikshant was brought in by the skipper. And he gave you the answer why it was. The new man punches it, plays it straight back to the bowler. No chance of a run. That's a dot delivery. One Sports, you know, the man who's come in at one down, he'd know that he would need to consolidate because Ankit Kumar from the other end, he's been going along nicely. Plays that very late. Almost out of the wicketkeeper's gloves. Gets a single. He's off the mark with that single. And now Ankit Kumar. It would be interesting to see how he goes about things. A spinner. How will he negate the spinner here? The leg spin of Dikshant. Dikshant coming around the wicket to the left-hander. That came in sharp. This is good bowling. He's bowling real tight lines, cramping the batter for any room. You get the idea what Ankit is trying to do. He wants room. And Dikshant at the moment, once again coming in with the angle. This is brilliant stuff. You know, he's such a committed cricketer as Dikshant. Gives it his all.
gives it all the gas. Be it with the bat, be it with the ball, slashes at it. The fielder gets around it. No chance of a run. That's another dot delivery. That is a sensational over. A wicket coming off it and just 1 run. Unbelievable stuff. A spinner, that too a wrist spinner in the power plays. That's the end of the third. And One Sports, they're 34 for 1 after the end of that over. So they saw the result, what the spinner brought to the table. Another spinner introduced into the attack. The left arm spinner this time around creams it away towards the cover region. That could be tight, but a wayward throw. What happened there? That was a wild throw. Free runs. Well, they were anticipating a run out, but what has happened is they've given away 5 easy runs. The wicketkeeper, he couldn't believe his eyes. Ankit Kumar and Ankit Narwal, both of them joining hands. A left-hand, right-hand combination at it. Now, Ankit Kumar, he's looked so comfortable out there. But how will he respond to spin? That is the question. He was super aggressive against the faster bowlers. And now, this is a test of what he's got to do, his skill sets against the spin bowling all-rounders or the specialists as well. That's cut away. He's got the gap this time around, threading it. That went racing towards the right of that fielder. Has played so well. That's what he does. He loves to make room for himself. And when the bowler looks to cramp him, he struggles just a tad bit. And he shapes perfectly for that cut shot. Look at that. He knew where exactly the gap was. Threading the gap with the surgeon's precision as well. He moves into the 30s in quick time as well. He's done the bulk of the scoring in this innings. Uses his feet. Had to do it. Had to come out at some point of time. He's got a maximum for it. Well, it was always on the cards. He was inching for it. You could sense it. It was almost like he called for it. The bowler bowling it slower through the air. Looking to use his guile. The batsman was so quick to transfer his weight. Comes down the ground. Meets the ball with the straight face of the bat and puts it sailing over long off. This time he's got... He was looking to repeat that shot. Pulls back his length. He sensed what exactly the batsman was trying to do. Pulling back the length and the ball moving away from the left-handed batter, and the keeper does the rest. So Ankit Kumar has to depart. Well, that's the way he plays. He's a double-edged sword. One Sports, they've lost both their openers now. They are 49 for 2 as Ankit Kumar, after a brilliant 37, goes back into the hut.
So the new man, he walks out to the center. A left-hander replaces another one. Another southpaw comes out to the center. Shivam Sharma picking up a crucial wicket. Good bowling, smart bowling by him. He was under the pump. He might have felt the pressure. Himateja, the new man, faces his first delivery. Just on the cusp of a personal milestone for the team. They were 1 run away from the 50-run mark. Ankit, it could be said that he threw away his wicket, but as I said, that's the way he plays. Makes room for himself. That's an excellent shot. That is pristine timing. Himmateja off the mark with a boundary and 50 up as well for the team, courtesy that shot after the end of that 4th over. One Sports, they are 53 for 2. A mixed bag, that a wicket coming off it, and also some runs. 19 runs to be precise. That's a lot. So 112 still required of the next 16 overs. So I think it will be trial by spin for the men in pink. And to take you through the next few overs, my co-commentator Aman Sharma joins in. 165 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम 17 स्पोर्ट्स को मिली है बढ़िया शुरुआत। शिवम शर्मा ने पिछले ओवर में अच्छा कार्य किया। पहले जरूर कुछ रन्स कंसीड किए, लेकिन उसके बाद अंकित कुमार को अपने जाल में फंसाया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दीक्षु। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक बहुत कमाल का ओवर करके गए थे दीक्षु। अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन दिया था और 1 विकेट निकाला था। अब अंकित नरवाल और के हिमतेजा उनकी चुनौती का सामना करेंगे दीक्षु। एक और बढ़िया गेंद, बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को। बल्लेबाजी अच्छी की थी दीक्षु ने, उसी का आत्मविश्वास कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपनी गेंदबाजी में भी। ये अभी तक बढ़िया ओवर दीक्षु का। एक और अच्छी गेंद जिसको सीधे खेलेंगे फील्डर के हाथ में बल्लेबाज। 5वां ओवर प्रगति पर। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर आएगा। बहुत मजा आने वाला है इस मुकाबले में। अब तक आपने भले ही इस टूर्नामेंट में कुछ वन साइडेड एनकाउंटर्स विटनेस किए हों, लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद आप एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट के गवाह बनने वाले हैं। कमर कस लीजिए, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ये 165 रनों का रन चेज आसान नहीं रहने वाला। ये डीप जाएगा मुकाबला। छोटी गेंद, डीप में खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर 1 रन। एक बार फिर से स्ट्राइक होगी रोटेट। 5वें ओवर की कार्यवाही अपने अंतिम लम्हों की तरफ बढ़ चुकी है। एक आखिरी गेंद दीक्षु के दूसरे ओवर की। एक और किफायती ओवर दीक्षु का। मात्र 3 रन इस ओवर से। 91 गेंदों में 109 रनों की आवश्यकता टीम 17 स्पोर्ट्स को। लास्ट बॉल, अच्छी गेंद। एक बार फिर से बल्लेबाज को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास दीक्षु का, लेकिन गेंद नहीं रोक पाए। वो पीछे बैकअप प्रोवाइड करने के लिए खिलाड़ी मौजूद थे। रन नहीं आएगा ओवर की आखिरी गेंद पर। 5 के बाद 56 पर 2 टीम 17 स्पोर्ट्स। After the completion of 5 overs, team 17 ऑलराउंड परफॉर्मेंस अभी तक दीक्षु का हमें देखने को मिला है। शिवम शर्मा एक बार फिर से गेंदबाजी आक्रमण में। अपने पहले ओवर में 19 रन कंसीड किए, लेकिन एक बड़ा विकेट भी निकाला। अंकित का विकेट। एक अंकित गए, दूसरे अंकित आए। अंकित नरवाल शिवम शर्मा के सामने।
फेस करेंगे शिवम शर्मा के दूसरे ओवर की पहली गेंद। अंकित नरवाल, फील्डिंग में कुछ बदलाव जारी पावर प्ले के इस आखिरी ओवर के लिए। लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को आगे बुला लिया गया है। बॉल डिलीवर करने से जस्ट पहले ये जो एक चेंज किया गया है, ये कितना काम आएगा। पहली गेंद काफी पीछे रखी शिवम ने। जानते हैं कि गेंद ज्यादा उछल नहीं रही है इस सरफेस पर, उतनी बाउंस नहीं है। अगर आप ज्यादा कंधे का इस्तेमाल नहीं करेंगे देन यू कैन डिसीव द बैटर्स। 89 में 109 की दरकार। एक और हाफ ट्रैकर कह सकते हैं आप। काफी पीछे ये गेंद रखी, बैकफुट पर गए बैट्समैन, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को धकेला। पावर प्ले का आखिरी ओवर, लेकिन ऐसा लगता है कि बल्लेबाजों ने मन बना लिया है कि वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की तरफ देखेंगे। बड़े शॉट्स अगर लगाए जा सकेंगे तभी लगाएंगे, डेस्परेशन नहीं दिखाएंगे, और आवश्यकता भी उसी चीज की टीम 17 स्पोर्ट्स को। हो सकता है कि आपको आखिरी ओवर तक जाता हुआ नजर आए ये मुकाबला। एक और छोटी गेंद, इस बार भी काफी नीचे रही बॉल। कवर्स पर खड़े हुए खिलाड़ी तेजी से आएंगे गेंद तक, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक अच्छे ओवर की तरफ बढ़ते हुए शिवम शर्मा, पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में एक अच्छा खासा अंतर, और वो अंतर इन द फेवर ऑफ 17 स्पोर्ट्स। एक और पीछे गेंद इनसाइड एज, क्विक रन कंप्लीट किया अंकित और हिमतेज ने। मात्र 2 गेंदें बची हुई हैं शिवम शर्मा के इस ओवर की, मात्र 2 गेंदें बची हुई हैं पावर प्ले के आखिरी ओवर की। इक्वेशन पर नजर डालिए, 86 गेंदों में 107 चाहिए 17 स्पोर्ट्स को। 8 विकेट्स अभी भी महफूज। अंकित नरवाल एक बार फिर से तैयार, अपनी पारी की 8वीं गेंद करेंगे फेस। ये बढ़िया बॉल, अंदरूनी भाग से टकराई गेंद बल्ले के और गई थी खिलाड़ी के हाथ में। स्फूर्ति दिखाई, स्विफ्टनेस दिखाई, वहां पर फील्डर ने क्विकली गेंद तक आए, बल्लेबाजों को रोका 1 रन कंप्लीट करने से। आखिरी गेंद पावर प्ले की, अंकित नरवाल वर्सेस शिवम। एक और गेंद जो कि जाएगी सीधे खिलाड़ी के हाथ में। पावर प्ले मुकम्मल, 6वां ओवर मुकम्मल। 58 पर 2, टीम 17 स्पोर्ट्स। After the completion of 6 overs, 17 Sports 58 for the loss of 2 wickets. They need 107 runs in 84 balls. मिडिल ओवर्स की शुरुआत हो चुकी है। शिवम मां भी एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे।
एक बहुत कमाल का ओवर अब तक हमें देखने को मिला है शिवम मावी का। पहली 5 गेंदों में मात्र 4 रन। एक बहुत ही कमाल का कमबैक। पहले ओवर में आए थे 14, लेकिन अब तक अपने दूसरे ओवर की पहली 5 गेंदों में दिए हैं मात्र 4 रन। बल्लेबाजों को रोक कर रखा है, शिकंजा कस कर रखा है। आखिरी गेंद शिवम मावी के दूसरे ओवर की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप चिप किया है, खिलाड़ी पीछे मौजूद नहीं, कवर्स के ऊपर से खेला शॉट, प्राप्त किए 4 रन। शिवम मावी के एक अच्छे ओवर में स्पॉइलर डाल दिया इस चौके ने। 7 ओवर्स 66 रन, 2 विकेट 17 स्पोर्ट्स। और एक बार फिर से नजर डालिए इस शॉट पर। थोड़ी सी बार ये गेंद की गई थी शिवम मावी के द्वारा और ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्लेबाज को खेल दिया उन्होंने गेंद को कवर्स के ऊपर और प्राप्त किए 4 रन। 7 के बाद 66 पर 2। टीम 17 स्पोर्ट्स 78 में दरकार है 99 की। 13 ओवर्स में बनाने हैं 99 रन। आस्किंग रेट लगभग 8 रन पर ओवर का। शिवम मावी के दूसरे ओवर से आए 8। पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अब किसको बुलाया है कप्तान ने? शायद खुद आए हैं कप्तान। पारी का 8वां ओवर। स्ट्राइक पर रहेंगे अंकित नरवाल। पहली गेंद बाएं हाथ के एक और स्पिनर अटैक में, बढ़िया बॉल, जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी की। आते ही पहली गेंद पर चलता किया है बल्लेबाज को। यह बहुत बड़ा मूवमेंट इस चेस के कॉन्टेक्स्ट में। अंकित नरवाल जो स्लोली एंड स्ट्रीटली अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, उनको पगबाधा के रूप में मयंक मिश्रा ने, कप्तान ने, पहली गेंद पर चलता किया है। तीसरा झटका लगेगा टीम 17 स्पोर्ट्स को। 66 पर 3। टीम 17 स्पोर्ट्स 7.1 ओवर का खेल मुकम्मल। अंकित नरवाल जरूर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वापस जाना पड़ेगा उन्हें। मयंक मिश्रा, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन सेटिंग एन एग्जांपल फॉर रेस्ट ऑफ द बॉलर्स। स्पेल की पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। 77 गेंदों में 99 और रन बनाने हैं टीम 17 स्पोर्ट्स को। एक अच्छी शुरुआत टीम 17 स्पोर्ट्स को मिली, लेकिन मिडिल ओवर्स में कोई भी मुकाबला बदला जा सकता है। नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं।
8 ओवर्स पूरे हुए, स्कोर इस समय 69 रन, 3 विकेट। आगे निकले बैट्समैन, लो फुल टॉस, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला। और इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगा मैं मेरे साथी कमेंटेटर राहुल का कॉम बॉक्स में। राहुल, ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है, आपकी क्या राय है इस मुकाबले को लेकर? क्या लगता है आपको, कौन से ओवर में जाकर हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम जीतेगी इस मैच में? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हम पहली बार एक लास्ट ओवर थ्रिलर विटनेस करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। By the looks of it, this might go down to the wire. It's even Stevens, as you said at the moment. A breakthrough provided by Mayank Mishra. That too at the right time. And 95 required of 71 deliveries. Looks to make room. But there are boundary riders now. The power play overs are done and dusted. Saurav Chauhan and Himmateja, they are at it. Left hand, right hand combination. Always problematic for the bowling team. Advances down the ground, reaches up to the pitch of the delivery, takes it on the full, drills it towards a long off, gets another single, gets one more run. Himmateja moves to 15 courtesy that single. He's playing runner ball. These two can bide their time, but the problem is, the required run rate is close to 8.5, but that will do. That will help them long. That's 4. That's crashed through the offside. That was traveling quick. The fielder putting in the tie, but unfortunately it was a bit too fast for him. That traveled quickly. That traveled fast towards the boundary ropes. Ends the over with a boundary. A good one for the batting team. They're 78 for 3 after the end of the 9th. That will ease a lot of nerves. Dikshant to Himmateja. Himmateja picking up his third boundary. Leg spinners, I have a feeling, never too keen to bowl against the left-handed batters. Slightly shorter in length, goes for the pull. He wanted to rug back onto the back foot. Just losing his balance slightly. Works it away towards the onside. Gets a single, gets one more run. Saurav Chauhan moves to 6. Gets Himmateja back on strike. Now slowly we see another partnership brewing between these two. They're looking comfortable. They're looking well settled. Not on that occasion, perhaps. But Himmateja is such a calm influence out there in the center. If he's got his eye in, he'll be looking to play shots all across ground. He can access all parts of the ground. Just like that. That's it straight. He picks up his pockets really easily and convincingly. Straight down the ground on that occasion. Moves into the 20s with that stroke. That's exactly the point I was making. He picks up the pockets in the gap. Be it for running those hard twos or picking up the boundaries. Can do that at will. He maintains a good pace throughout his innings. Does Himmateja. And Mayank Mishra. Oh, goes again. This time through the onside. Has it gone all the way? I think it might just have, or rather it's just about short, suggests the umpire. That was a close call, but back-to-back boundaries for Himmateja. Flat. Very well played. Once again clearing his front foot. Innocuous. Back-to-back boundaries. That will ease a lot of nerves. That required run rate has come down below 8 now. It looks fairly comfortable. One Sports. They are in the driver's seat all of a sudden. Dabs it away. The fielder does exceptionally well. That ball was traveling once again. The outfield is lightning quick. Keeps it down to just 1. Another single taken. 1 more run added to the total.
Himateja batting in his 20s. Saurav Chauhan, meanwhile, is up. So far played second fiddle. Runs it across. He wanted a single sent back by Himateja. In the end, that proved to be the right call. That would have been suicidal. And The mind. It is our master. बंद करो नहीं वो दे दो फिर हेलो अरे so at the halfway mark, if you look at it, 1-7 Sports so far, they have the upper hand. 76 required of the next 10. The required run rate has dropped below 8. The spinners have been taken out. Time for a faster bowler to come into the attack. They're pressing for wickets here, the men in yellow, because these two have been fairly comfortable against the spinners. Just losing his run of the faster bowler. We'll have to go back. We'll have to reload and come in running. 77 of 60. That is an equation that they will take at any stage. They've got 7 wickets in hand, 7 wickets to play with. But this left arm pace up is another exciting talent. Salman Khan, the batsman, pushes it away towards long off, gets a single. You know, no matter how good you are, you don't like to bowl to a left-hand, right-hand combination, especially when they rotate the strike so easily. It's a dreaded nightmare. Salman Khan, meanwhile, running in again. Bowls it on the pads of the batter, just away. He wanted to just send it towards the fence at fine leg. Just misses it. Straight into the wicketkeeper's gloves. White signal by the umpire. We'll have to re-bowl that one. One more run down the extras column. And that's something we were talking about. You know, when the games are so close, every single run matters. So as a fielding unit and as a bowler, you know, what you've got to earmark is that you don't give away too many extras, because batters like this, they'll go for the big shots time and again. He just helped it along. It was pure timing. He clips it away. Brilliant hit. Brilliant hit. The moment he hit it, it was only headed one way. That was over and beyond the boundary ropes. And look at those hands as well. So fast through the ball. Supple wrists. The score moves to 96. Now they're approaching the 3-figure mark. Once again, aerial, but this time the fielder should get around it. They wanted a second. They can't get it. At the last moment, they decide against it. So just a single on that occasion.
Himateja batting on 29, Saurav Chauhan batting on 13. Saurav has faced 11 deliveries. He hasn't hit a single boundary, but he's hit a maximum. Pushes it straight back to the bowler. No chance of a run for Himateja. So Salman Khan into his second over. He's been expensive today. That's pretty much unlike Salman. 5 bowlers have been used. Shiva Mavi was mighty expensive. Conceded 22 runs in his 2 overs. Probably will come back in the death. Salman into his second. He's already conceded 25. Dikshant, he was the top scorer in the first innings. He's been so effective. Has picked up a wicket, has given away just 13 runs in his 3 overs that he's bowled. Shivam Sharma has picked up 2 wickets. Beg your pardon, he's picked up 1 wicket. He's given away 21 runs. Mike Mishra, the skipper, has bowled 2 overs, conceded 13 runs. That would be some more runs. A few more, 4 of them, I reckon it is 4 of them. Another boundary. So this comeback over for the left arm pacer not quite going his way. He's conceded runs, 14 of them in this one. 100 up as well for the batting team. That will give them a lot of confidence. 100 up, the 3-figure mark up. The 102 for 3 after the end of that. The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you become. And with that mindset, you are unstoppable. So drinks off the field and play
does resume. 11th gone. One Sports. They're 102 for 363 required of the next 54. And there are two batsmen out there in the middle who've got their eyes set in. 7 wickets intact. The required run rate 7 should be comfortable. They need to keep wickets intact, and the men in yellow would know that they want wickets. Shivam Sharma into his third over, the left arm spinner. Wasn't in total control, but rides the bounce, puts it away in the gap. That's 4 more runs. Makes it even more comfortable. The required run rate comes down below 7 for the first time in this innings. How well did he control that? Nicely getting on top of the bounce. It was away from his body. He pushed it through. Gets 4 more. The score moves to 106 now. Just 59 required. Plays it late. Uses his wrist. Turns it away towards the onside. Will they push for the second? Well, the left-hander wanted a second there, but sent back by his partner, Saurav Chauhan. The current run rate is just a shade below 10. It's almost 9.5. Shivam Sharma bowling his third over. So 58 required of 52. Well, the men in yellow, the Kingsway, will understand that if they play their quota of 20 overs, then 1-7 Sports are definitely winning this one. They need wickets. They need to manufacture wickets somehow. And for that, they need to bring in the premier bowlers. Because at this point of time, there's no point holding them back. Gets down on one knee, sweeps it through. That's a not so pleasant looking sweep shot. Works it away towards the mid-wicket region. Gets 1 more run. Well, they can afford to do it in singles now. A boundary of the first delivery, and then they've taken it easy. He was looking for that big shot. Not required. Extra bit of bounce, extra bit of zip on that occasion. Dot delivery. Final delivery of the over coming up. Saurav Chauhan still the man on strike, batting on 18. His day with the bat has blown hot and cold. On certain occasions, it looked like he was struggling, and on certain occasions, it looked like he was timing the ball so well. Turns it away towards the onside. Gets a single. He will keep strike. That's the end of the 12th. Another decent over for the batting team. 1 Sports. They're 110 for 3. At the end of 12 overs, team 1-7 scores 110 for the loss of 3 wickets. In last 48 balls, they need 55 runs. So Aman Sharma will be taking you through to the next few overs. ये भी चेंज मार दी उसको सालो कौन सो है तो बात करे अपनी साइड वालों अपनी साइड वालों अपनी साइड आखिरी 48 गेंदें टीम 1-7 स्पोर्ट्स को चाहिए 55 रन। 12 ओवर्स में 110 बन चुके हैं, और जो सबसे अच्छी चीज उनके लिए है वो ये कि उन्होंने अभी तक मात्र 3 विकेट्स खोए हैं। 7 और विकेट्स
टीम 17 स्पोर्ट्स के बचे हुए हैं। शुभम शर्मा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी के 13वें ओवर में स्ट्राइक पर रहेंगे। आई थिंक सौरभ चौहान है स्ट्राइक पर और शिवम आई थिंक अभी ओवर करके गए हैं, तो बस कुछ ही सेकंड्स में कंफर्म हो जाएगा कि कौन गेंदबाज आया है। क्या शिवम ही है गेंदबाजी पर? प्ले प्ले चलिए पहली गेंद पारी के 13वें ओवर की और सीधे खेला उस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ बल्लेबाज ने। तो शुभम तो नहीं है गेंदबाजी पर, दाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाजी करने आए हैं और हमने देखा पहले कि शिवम बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। पारी के 13वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। करण लाल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पारी के 13वें ओवर में एक और गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया है कप्तान मयंक ने। एक और थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद, शॉट ऑफ लेंथ बॉल, स्वीपर कवर की तरफ उस गेंद को खेला, 1 रन प्राप्त किया। नेल्सन जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट माना जाता है बल्लेबाजों के लिए, उससे तो ऊपर निकल गए हैं टीम 17 स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। सौरभ चौहान स्ट्राइक पर, एक और शॉट ऑफ लेंथ बॉल, उसको धकेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ बल्लेबाज ने। लगातार करण लाल पीछे ही गेंदें करते हुए नजर आए हैं। वो शायद बल्लेबाजों से कह रहे हैं कि लगाइए पुल शॉट और डीप में जो ऑन साइड पर खिलाड़ी खड़े हुए हैं उनके हाथों में गेंद को थमा दीजिए। इस बार फ्लाइटेड बॉल, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेला, फंबल हमें देखने को मिला वहां और 1 को 2 में तब्दील करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने स्टंप्स के बीच। 115 पर 3 और अब 50 रनों की दरकार टीम 17 स्पोर्ट्स को जीत के लिए। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट के बीच में बहुत बड़ा अंतर। टीम 17 स्पोर्ट्स इस मुकाबले में थोड़ी सी आगे नजर आ रही है और यहां पर हमें एक और बाउंड्री आती हुई भी नजर आ जाएगी, यानी कि टीम 17 स्पोर्ट्स धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है इस मुकाबले पर। एक और गेंद जो थोड़ी सी पीछे नजर आई हमें और उसको पीछे जाकर बल्लेबाज ने सामने की तरफ खेला। इससे पहले शॉट लगाया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी थोड़े से वाइड नजर आए हमें। स्ट्रेट होते तो शायद कैच पकड़ सकते थे, लेकिन आसान नहीं होता टीम किंग्सवे के उस क्षेत्ररक्षक के लिए ये कैच पकड़ पाना, क्योंकि काफी सामने मारा था गेंद को हिमतेज ने। 119 पर पहुंच गई है टीम 17 स्पोर्ट्स। खिलाड़ियों का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। 100 तो एक साथ किंग्सवे के बहुत सारे खिलाड़ी आपको खड़े हुए नजर आए कुछ देर पहले एक ही स्थान पर, और यही बात चल रही होगी कि किस तरीके से टीम 17 स्पोर्ट्स को 165 से पहले रोका जा सकता है। आखिरी गेंद ओवर की, स्टेप आउट किया बल्लेबाज ने, गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला और 1 रन प्राप्त किया। बहुत अच्छी जो शुरुआत थी वो मिली थी टीम 17 स्पोर्ट्स को और उसी शुरुआत को
कैरी फॉरवर्ड किया है बल्लेबाजों ने। 13 ओवर्स के बाद 120 पर 3 टीम 17 स्पोर्ट्स। 42 गेंदों में मात्र 45 रनों की आवश्यकता। ऑलमोस्ट रन अ बॉल ये गेम है टीम 17 स्पोर्ट्स के लिए। एक बाउंड्री और उसके बाद बची हुई गेंदें और बचे हुए रन्स आपको बराबर होते हुए नजर आएंगे। 42 में 45 चाहिए टीम 17 स्पोर्ट्स को। अगर 1-2 विकेट्स यहां पर आ जाते हैं तो इस मुकाबले में एक बार फिर से जान डाली जा सकती है। इस मुकाबले को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। दोनों ही बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी हैं और दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि यहां से बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अपना विकेट थ्रो नहीं करना है, अपनी टीम को जीत तक ले जाना है। अच्छा शॉट लगाया गैप पे, गली पर खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, क्विक रिफ्लेक्सेस हमें देखने को मिले गली पर खड़े हुए फील्डर के। अब 41 में 45, 120 पर 3 टीम 17 स्पोर्ट्स। कप्तान में मिश्रा इस समय हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला रन तेजी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने स्फूर्ति दिखाई, तेजी से दौड़ कर आए गेंद तक और सिर्फ एक रन लेने की अनुमति दी दोनों बल्लेबाजों को। 40 में 44 17 स्पोर्ट्स को चाहिए। मयंक मिश्रा अपने स्पेल की पहली गेंद पर एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया था, लेकिन उसके बाद कोई और विकेट के दर्शन हुए नहीं है मयंक मिश्रा को। विकेट निकालना चाहेंगे कि उनकी टीम वापसी करे इस मुकाबले में। जरूर इस समय बैकफुट पर हमें देखने को मिल रही है टीम 17 स्पोर्ट्स, लेकिन माफी चाहूंगा, बैकफुट पर 17 स्पोर्ट्स नहीं, बैकफुट पर टीम किंग्सवे है। 17 स्पोर्ट्स पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर और ड्राइविंग सीट पर हमें नजर आ रही है इस मैच में। 122 रन 3 विकेट, 39 में 43 चाहिए। एक और अच्छी गेंद मयंक मिश्रा की। डॉट बॉल्स की आवश्यकता है टीम किंग्सवे को। किंग्सवे स्पोर्ट्स जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब हमने देखा कि गेंदें ज्यादा उछल नहीं रही थी और वो इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि जो गेंदबाज थे टीम 17 स्पोर्ट्स के, उन्होंने लगातार वेरिएशन किया, लगातार उंगलियां फेरी गेंद में। ये बढ़िया बॉल, जोरदार अपील मयंक मिश्रा, उनको इस बार अंपायर ने किया निराश। ऐसे ही कुछ मोमेंट्स और चाहिए टीम किंग्सवे को इस मुकाबले में वापस आने के लिए। तेज गति की गेंद पड़ने के बाद तेजी से ट्रैवल करती हुई नजर आई, पैड पर लगी और ऐसा लगा जैसे शायद लेग स्टंप को मिस कर रही है, लेकिन मयंक मिश्रा ने कॉन्फिडेंटली वहां पर अंपायर से सवाल पूछा था। ओ लेफ्ट शॉट खेलने की कोशिश, डाउन द लेग साइड बॉल, वाइड का इशारा अंपायर का। मयंक मिश्रा भूल गए अपनी लाइन, गलती कर बैठे। एक डॉट बॉल आई और उसके तुरंत बाद एक वाइड आ गई, यानी कि जो एक रन है वो मिल जाएगा टीम 17 स्पोर्ट्स को, एक अतिरिक्त रन। एक और बार खराब गेंद, लेकिन उसको उसकी सही नसीहत तक नहीं पहुंचा पाए बल्लेबाज। दायरे के अंदर फाइन लेग पर खड़े हुए खिलाड़ी ने अच्छी फील्डिंग की, गेंद को रोका। मयंक मिश्रा का तीसरा ओवर मुकम्मल, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी करी है, 18 रन दिए हैं, एक विकेट मिला है। 14 के बाद 125 पर 3 17 स्पोर्ट्स। आखिरी 36 गेंदों में टीम 17 स्पोर्ट्स को आवश्यकता है 40 रनों की। चौदह ओवर्स के बाद टीम 17 स्पोर्ट्स 125 रन 3 विकेट, 36 गेंदों में चाहिए 40। नहीं आप अकेले खाओ, आप अकेले खाओ। आखिर में मैं ही सारे खा गया। एक बाएं हाथ के स्पिनर अभी अपना ओवर कंप्लीट करके गए और दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर आ गए और आते ही उन्होंने कर दी गलती, दे दिए कुछ और रन्स अपने अपोनेंट्स को तोहफे के रूप में। वाइड +1, विकेट कीपर भी नहीं समझ पाए इस गेंद को।
निकल गई गेंद उन्हें बीट करके, तो 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर टीम 17 स्पोर्ट्स को। स्कोर हो गया है 127 रन, 3 विकेट, 36 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। जिस तरीके से वो खेल चलाना चाहती थी टीम किंग्सवे, उस तरीके से खेल चला नहीं है, लेकिन यहां अभी भी ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में ट्विस्ट आना बाकी है। आगे निकले बल्लेबाज, एलिवेशन मिला नहीं, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथ में दम तोड़ती हुई नजर आएगी गेंद। शिवम मावी का एक अच्छा कैच, डिसअपॉइंटेड नजर आते हुए हिमतेज अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर रह गए। और ये जो विकेट निकाला है शिवम शर्मा ने, ये टीम किंग्सवे की जीत की मूर्छित पड़ी हुई उम्मीदों को एक बार फिर से जीवित करेगा। 127 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, टीम 17 स्पोर्ट्स। इस समय जरूर पलड़ा थोड़ा सा भारी है टीम 17 स्पोर्ट्स का, लेकिन मत भूलिए क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां अगर 1-2 विकेट्स और निकाल लेती है टीम किंग्सवे तो मैच पलट सकता है। जो कहानी है वो एक और मोड़ ले सकती है। अभी भी 38 रनों की जरूरत है टीम 17 स्पोर्ट्स को। शिवम शर्मा को मिलने वाली दूसरी विकेट। सौरभ चौहान 20 गेंदें खेल चुके हैं और अब उन पर ही नजरें रहेंगी। नए बल्लेबाज जो पहुंचे हैं उनको भी ज्यादा परेशानियां होंगी नहीं, उतना दबाव नहीं है उनकी टीम पर, लेकिन अगर कुछ डॉट बॉल्स आती हैं यहां से किंग्सवे के गेंदबाजों के द्वारा तो हमें इस मुकाबले में चीजें परिवर्तित होती हुई नजर आ सकती हैं। डॉट बॉल्स की जरूरत, विकेट्स की जरूरत टीम किंग्सवे को। 35 में चाहिए 38। 6.51 का रिक्वायर्ड रन रेट, यानी लगभग हर ओवर में आपको 7 रन बनाने हैं, और अगर आप वो काम करने में सफल रहते हैं तो फिर आप जीत प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। नए बल्लेबाज ने आते ही गेंद को सीधे शिवम शर्मा के हाथों की तरफ खेला। सुमित कुमार नए बैट्समैन, बैक टू द बॉलर शॉट, कोई रन नहीं। 34 में 38, समीकरण पर नजरें बनाकर रखिए। एक और गेंद जो पड़ने के बाद थोड़ी सी घूमेगी, एक और गेंद जिस पर कोई रन आएगा नहीं। ये डॉट बॉल्स इस मुकाबले में जान डालेंगी। ये डॉट बॉल्स टीम किंग्सवे के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद विकेट आया और फिर 2 डॉट बॉल्स। 3 और गेंदें शेष शिवम शर्मा के स्पेल की। नए बैट्समैन सुमित कुमार इस गेंद पर क्या रन ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल ढूंढ पाएंगे रन। लॉन्ग ऑन पर मौजूद है शिवम मावी। जब तक वो गेंद तक आए तब तक 1 रन कंप्लीट कर चुके थे दोनों बल्लेबाज सुमित कुमार और सौरभ चौहान। स्कोर इस समय 128, 4 विकेट के नुकसान पर। सौरभ चौहान वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले तो ज्यादा अच्छा रहेगा टीम 17 स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुमित कुमार बल्लेबाजी नहीं कर सकते। वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। डेप्थ है टीम 17 स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी में। उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगा आपको। डीप डाउन द ऑर्डर आपको बल्लेबाज देखने को मिलेंगे। नंबर 6 पर आए हैं सुमित कुमार, और सुमित कुमार की जब आप क्लासिकल बैटिंग देखेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि कितने नंबर तक अच्छे बल्लेबाज हैं टीम 17 स्पोर्ट्स के पास। ओ शिवम शर्मा के बाईं तरफ से ये गेंद गई, काफी देर तक हवा में थी ये गेंद। जरूर एक उम्मीद की किरण जगी थी। ऐसा लगा था कि शायद सुमित कुमार का भी विकेट मिल गया शिवम को, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। शिवम का स्पेल हुआ मुकम्मल, तो शिवम को तो नहीं मिलेगा सुमित कुमार का विकेट, लेकिन क्या किसी और गेंदबाज को मिल सकता है?
वो देखने वाली चीज रहेगी। 15 के बाद 130 पर 4 टीम 17 स्पोर्ट्स, 30 में चाहिए 35। 15 overs gone. 17 sports are 130 for 4. 35 required of the next 5 overs. आखिरी 5 ओवर्स, आखिरी 30 गेंदें। इस ओवर में जो कुछ होगा वो बहुत कुछ तय करेगा। इस ओवर पर बहुत सारी चीजें निर्भर, और कप्तान आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। मयंक मिश्रा अभी तक प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से, कई बार बीट किया है बल्लेबाजों को। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, जो प्रेशर डाला गया था वो प्रेशर बहुत हद तक इन 3 रनों की वजह से रिलीज हो जाएगा। गलती करने से बचना होगा। शायद वहां पर हमें गेंद पैर से लगती हुई नजर आई। लेग बाई के ये 2 रन, वाइड नहीं थी, यानी 2 ही रन आएंगे इस गेंद पर। ये भी गेंद बहुत अच्छी, बिल्कुल स्टंप पर। पहला रन तेजी से पूरा किया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेंगे तो दूसरा रन लेने का मौका मिला ही नहीं बल्लेबाजों को। अब आ गए हैं 3 रन इस ओवर से। 2 गेंदें हुई हैं, 4 बाकी हैं मयंक मिश्रा के स्पेल की। बढ़िया गेंदबाजी करी है। 3.2 ओवर, 19 रन, 1 विकेट। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, अच्छा कनेक्शन, क्लीन बॉल हिटिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर। और अब बहुत हद तक ये चीज साफ हो चुकी है कि टीम 17 स्पोर्ट्स वो इस मुकाबले में है पूरी तरीके से, और ये मुकाबला बहुत हद तक उनकी पकड़ में है। 27 में अब 26 चाहिए। आस्किंग रेट 6 से नीचे आ चुका है। 20 ओवर्स के मुकाबले में अगर किसी टीम के पास 6 विकेट्स बचे हुए हों और आस्किंग रेट 6 से नीचे हो, तो फिर उस टीम के जीतने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हो जाते हैं। आई वुड से 95% से भी ज्यादा हो जाते हैं। किंग्सवे को चाहिए एक मिरेकल, एक चमत्कार। किंग्सवे को चाहिए विकेट्स। जोरदार अपील, इस बार उंगली उठेगी। मयंक मिश्रा विल मेक अ कमबैक। विकेट नंबर 5। Is there any twist in the tail? Is still left. Last over of Mayank Mishra. So many things we have witnessed. 6 भी हमने देख लिया, लेग बाई के वो रन भी देख लिए, तो सिंगल भी देखा और अब विकेट भी देख लिया। स्टंप्स के सामने पाए गए बल्लेबाज सौरभ, और एक वेल सेट बैट्समैन को आउट किया है मयंक ने। कप्तान एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, जोर आजमाइश करते हुए, पूरा प्रयास करते हुए अपनी टीम की इस मुकाबले में जीत सुनिश्चित करने के लिए। 5 और विकेट्स टीम 17 स्पोर्ट्स के पास हैं। बढ़िया खेले सौरभ, लेकिन मलाल रहेगा इस चीज का कि उन्हें मैच फिनिश करने का मौका नहीं मिला। आउट हुए वो, मैच ना फिनिश कर पाने का उनको डेफिनेटली मलाल रहेगा। विकेट गिर चुका है। नंबर 7 के जो बल्लेबाज हैं वो आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मयंक मिश्रा अगर जाते जाते 1-2 घाव और दे सकते हैं 17 स्पोर्ट्स को, तो ये मुकाबला और खुल जाएगा। ये सभी खिलाड़ी जो इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं मैदान पर, इनमें काबिलियत है अकेले मैच बदल देने की, इनमें काबिलियत है मैच को पलट देने की। मयंक मिश्रा की आखिरी 2 गेंदें, एक और बढ़िया बॉल, पीछे ही रहकर खेला शॉट, एक बार फिर से आस्किंग रेट 6 के ऊपर निकल चुका है, लेकिन वो चीज उतना प्रभाव नहीं डालेगी बल्लेबाज पर, क्योंकि 26 रन बनाने 25 गेंदों में, नॉट अ बिग डील फॉर द बैटर्स। आखिरी गेंद 16वें ओवर की, स्कोर 139 पर 5। एक और छोटी गेंद इनसाइड एज, पैर पर लगी बॉल। मयंक मिश्रा विल फिनिश हिज स्पेल इन अ फैंटास्टिक मैनर। 4 ओवर्स में उन्होंने दिए 25 रन, निकाले 2 विकेट्स।
16 के बाद 139 पर 5 टीम 17 स्पोर्ट्स। 24 गेंदों में चाहिए 26 रन टीम 17 स्पोर्ट्स को। Now I'll be joined by my co-commentator Rahul. Rahul, what do you think about this game? 26 in 24 balls, 5 wickets in hand. Somewhere this game is bent towards 17 sports, but still so many things are going to happen. Yes, you can put it both ways. It's game on as well as it's leaning towards 17 sports. Because 26 runs in the next 4 overs, especially when you've got 5 wickets in hand, seems to be fairly comfortable for any team. But this is a funny game. The skipper Mayank Mishra, as we all call it, leading from the front, giving it his all in his last over, picking up a wicket, the all-important wicket. A set batsman, Yash June, meanwhile the new batter is out there. He's yet to get off the mark. So 2 relatively new batters out there. Sumit Kumar is batting on 3. He's faced just 6 deliveries. Meanwhile, the wrist spinner into the attack. Nerves of steel. Is it? No, it's not, because he's found the fielder. Well, there was no need to play that shot. He went aerial and he's been hauled out. They've lost their 6. Well, they had to be sensible at this stage. Runner ball scoring was apt, but he decided to release all the pressure by himself. Slightly shorter in length, goes for the pull, and Yash June is dismissed. He doesn't open his account. How unfortunate is that? He would be kicking himself. And what that also propels is that brings in the number 8 onto the middle. And now you can say it's even Stevens. खुल चुका है ये मुकाबला पूरी तरीके से। एक रन बॉल गेम एक इंटरेस्टिंग और एक थ्रिलिंग मैच में तब्दील होता जा रहा है। दीक्षु ने अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया है अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में, और एक बार फिर से दीक्षु आए और उन्होंने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक थ्रू स्पेशलिस्ट दीक्षु अपने स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर यश जून को उन्होंने किया आउट। नहीं खोल पाए अपना खाता यश। माफी चाहेंगे, यश नहीं सुमित आए हैं वापस। यश अभी भी बीच मैदान पर हैं। 23 गेंदों में 26 चाहिए टीम 17 स्पोर्ट्स को। This game is on, Rahul. Dikshu can turn the tables. Well, as they say, sometimes one brings 2. That's exactly what has happened. And Dikshu is a man with a Midas touch for the men in yellow. He came out, came in at 1 down, scored quick runs. He was a top scorer, and now with the ball, he's delivering the goods, especially at this stage, his final over, the 17th of this innings. They desperately needed a wicket, and they've got one. The new batsman out there in the middle. He'll be facing his first delivery. Kuldeep Hooda. He was sensational with the ball, especially in the middle overs as well as the death. He's off the mark and up and running straight away. So you had 2 batters who are yet to open the account. Kuldeep has just got his first run. And Yash June now, he's on strike. He's faced just 2 deliveries. So they will be feeling jittery with these 2 batters. But all you've got to do as a batting unit is stick around. Make sure you play your quota of 20 overs. And it should be fairly easy because from here on, 24 required of the next 21 deliveries. You'll get at least 1 rubbish delivery, isn't it? एक खराब गेंद बहुत कुछ बदल सकती है इस मुकाबले में। सीधे बैट से खेला डॉट बॉल, यानी कि अब चाहिए 20 गेंदों में 24 रन। दीक्षु
I will say that he has got a golden arm. 2 विकेट्स उन्होंने निकाले, बल्लेबाजी भी बहुत कमाल की बल्लेबाज कुलदीप वो आगे निकले, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला, टहलते टहलते 1 रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल वहां पर 17 स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज कुछ देर पहले आउट हुए हैं उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की और गलती भी। आखिरी गेंद दिक्षु के स्पेल की, एक यादगार स्पेल की, 19 में 23 की आवश्यकता। Well, a predicament before the start of play of mentioning this game as something which might go down to the wire has proven to be right. Another single. He will keep the striker to see that single. An eventful over that. A lot happening. 17th gone, 1-7 Sports. They're 143 for 7. They require 22 of the next 3 overs. 17 overs gone, team 17 Sports 143 for the loss of 6 wickets. In 18 balls, they need 22 runs to win. अठारह में 22 की आवश्यकता टीम 17 स्पोर्ट्स को। कुलदीप हुड्डा और यश जून दोनों ही बल्लेबाज कहीं ना कहीं प्रेशर महसूस कर रहे होंगे। एक अच्छी चीज जो टीम किंग्सवे के पर्सपेक्टिव से है वो ये कि एक्सपीरियंस कैंपेनर शिवम मावी के ओवर्स अभी भी बाकी हैं और जो पेनल्टीमेट ओवर्स हैं इस मुकाबले के वो आपको करते हुए नजर आएंगे शिवम मावी। You know, the caliber he has and the level where he has played, you can be rest assured that he's adept at soaking in the pressure. At the same point of time, Kuldeep and Yash June will be feeling the pressure from the other end. 22 required of the next 3. It's doable. It should be fairly easy. But the way this game has progressed ever since we started in the afternoon, it's anybody's game. I dare say that. And all 3 results possible. It would be thrilling if we could get to a super over, isn't it? At the moment, Kuldeep and Yash would be hoping that sense will prevail as they face up Shivam Mavi, who will be steaming in. He's got 2 overs up his sleeve. He'll be bowling the 18th and the 20th. After this, he'll be bowling the final over. The question is, who will be bowling the penultimate over? और राहुल 20 ओवर्स के मुकाबले में ऐसा माना जाता है कि जो 20वां ओवर होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण 19वां ओवर होता है। शिवम मावी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पहली गेंद फेस करेंगे कुलदीप। अच्छी गेंद, ये रन नहीं मिलेगा। 17 गेंदों में अब 22 रन चाहिए। टेबल्स पूरी तरीके से टर्न हो चुकी हैं अब मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेशर थोड़ी देर पहले तक टीम किंग्सवे पर था अब वही प्रेशर कहीं ना कहीं टीम 17 स्पोर्ट्स के बल्लेबाज महसूस कर रहे हैं। उनके 4 विकेट्स बचे हुए हैं और उन्होंने अभी 143 रन बनाए हैं और उन्हें बनाने हैं 22 और रन जीतने के लिए। 17 और गेंदें बाकी हैं। शिवम मावी 18वां ओवर कर रहे हैं राहुल और फिर 20वां करेंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि 19वां ओवर कौन करेगा। You get the feeling that it will be the left armer Salman who will be bowling the penultimate over. And you're right, the pressure will only mount with each passing dot delivery. It's not a dot, they'll get a single. We'll wait for the verdict from the umpire. Leg buys in all probability. It is a leg buy. They won't mind how it comes as far as they come. Another run added to the total. That's what all matters for the men wearing the pink jersey. चाहिए 16 में शिवम मावी
पहले ओवर में 14 रन कंसीड किए, दूसरे ओवर में 8 रन कंसीड किए, बट उन 14 रनों का बिल्कुल मलाल नहीं होगा शिवम मावी को अगर यहाँ पर आखिरी के ओवर्स में वो किफायती गेंदबाजी करते हैं. He's known to deliver the goods when it actually matters as Shivam Mavi. He hasn't disappointed so far. He's executed his plans so well. And the batters, you can see they are not 100% confident against Shivam Mavi. Also consider this fact that they're relatively new. Won't be easy for them to score as freely as the batters that came before them. Also, the surmounted amount of pressure. Meanwhile, Shivam steaming in. Can he close the over well? That's clip off his bat, but finds the fielder straight to him. That travelled quickly, but straight into the hands of that waiting fielder. That's another wicket. The men in yellow are in it. How well have they soaked in the pressure? The skipper of 17 Sports, he can't believe it. He is stunned. They've absolutely thrown it away. At one point of time, they were sailing smooth. They were on top of the game. They were in the driver's seat. What happened? They've thrown it away. At one point, Rahul, the equation was 25 runs in 26 balls. But now when you see that equation, you will look it going in the favor of Team Kingsway. In 15 balls, Team 17 Sports, they need 20 runs. Shivam Mavi, just before this ball, he changed the pace. That was a slower delivery. But the next delivery, the very next delivery, was a quicker one. The batter flicked it and found the fielder. One more wicket down. Now the batters of lower order will come. And it will not be easy for them to score runs against Shivam Mavi. Won't be easy at all. And you've got to add to the fact that Mavi's on song. He's got amendments to make. He was expensive in his first two with the new ball. And now he's coming back strong, showing why he's rated so highly. The new batter, meanwhile, makes his walk out to the center. 15 में 20 नहीं, अब 14 में 20 चाहिए. 17.4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. 14 गेंदों में 20 रन चाहिए टीम 17 स्पोर्ट्स को. कुलदीप दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं. स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज गए हैं. शिवम मावी की चुनौती रहेगी नए बल्लेबाज के सामने. एक और बार दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन विकेट पर देखने को मिल जाएगा राहुल. I don't think at this point of time Mavi minds that, because it's the lower end batsman, the lower order batsman, the number 9 batter who's come out, played and missed straight away. He's bowling quick. Now he's fired up. He's building up some steam. Final delivery. Can he close it off well? That is a question. Shivank Vashish is a new batter. Cricket. This is cricket for you guys. एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से ये मुकाबला 17 स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, लेकिन कहानी देखिए बदल चुकी है. जो मोमेंटम है वो इस समय टीम किंग्सवे के साथ. आखिरी गेंद ओवर की, यॉर्कर करने का प्रयास, फुल टॉस, पुश किया उसको अपने से दूर. एक रन आएगा आखिरी गेंद पर. शिवम मावी के 3 ओवर्स पूरे हुए और इस ओवर में बल्ले से मात्र 2 रन. That's the class of Shivam Mavi, and that's what an experienced player does in the crucial stage of the game. 18वें ओवर में ज्यादा रन्स नहीं दिए शिवम मावी ने. 18 ओवर्स के बाद 146 पर 7. टीम 17 स्पोर्ट्स आखिरी 12 गेंदें और रन चाहिए 19. Outstanding stuff. Truly outstanding.
This is brilliant cricket. Now, the final 2 overs. Now, Shivam has done his job, Amit. Now it's up to Shahrukh, I believe. The left arm seamer. Will he be an able partner to Shivam? What do you reckon? He's bowled well, but he's got a task to do here. The penultimate over, the all-important over, as you pointed out. फर्स्ट बॉल 19th ओवर. कुछ देर के लिए गेंद हवा में थी, लेकिन नो मैंस एरिया में गिरेगी. 1 रन प्राप्त करेंगे बल्लेबाज. शिवांक वशिष्ठ दूसरे छोर पर पहुंच गए. कुलदीप स्ट्राइक पर है. 11 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है. यहां अगर एक बड़ा शॉट आ जाता है तो वो बहुत रिलीफ देगा टीम 17 स्पोर्ट्स को. और वहीं अगर 1-2 डॉट बॉल्स आ गई तो चीजें पूरी तरीके से बदल सकती हैं. बैट घुमाया, लेकिन कुलदीप के बैट से कोई कनेक्शन नहीं गेंद का. अच्छी गेंद ये सलमान खान की. बैक ऑफ लेंथ, उंगलियां फेरी थी इस गेंद में, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये मुकाबला टीम 17 स्पोर्ट्स की पकड़ से निकलता जा रहा है. सलमान खान 19वां ओवर कर रहे हैं. तीसरी गेंद, बल्ला घुमाया कुलदीप ने. गेंद बहुत ऊपर गई है. कुलदीप को नहीं है कॉन्फिडेंस अपने शॉट पर. बॉटम ऑफ द बैट से बॉल टकराई, सिर्फ एलिवेशन प्राप्त करती हुई नजर आई. गेंद दूरी नहीं, सीधे पहुंची गेंद एक बार फिर से शिवम मावी के हाथों में. अच्छा कार्य किया वहां पर सलमान खान ने. गति परिवर्तन, और आखिरी के ओवर्स में ये गति परिवर्तन बहुत कुछ कर सकता है. बड़ी विकेट, और सही समय पर ये विकेट निकाली है सलमान खान ने. अभी तक कोई विकेट नहीं मिली थी, बट ही चोज द राइट टाइम टू टेक द विकेट. Well, it seems like 17 Sports, they've been holding the candle all day long, and just when the lights go out, they blow it away. It was their game to be won. How quickly things have turned. The tables have truly turned. 18 required of 9. And 17 Sports in the quest for a big shot. The left-hander, rather the right-hander, I believe, was looking for that big shot. Goes aerial, finds the man, and another one falls. Salman Khan, meanwhile, he's doing so well. He's been an able partner to Shivam. That's what we were talking about, me and Ahmed. Will he be able to do the job of bowling the penultimate over, considered the most important over, especially if somebody's batting second? The pressure, all of it is on you. Works it away towards the onside. As he found the gap, the fielder should cut it off. Keeps it down to just one. No timing there. Only a single. He's off the mark with that single is Ashish. Well, Ashish, after he bowled that spell, he wouldn't have imagined that he would have to come out, especially at this stage, and score quickly. That required run rate has shot up to 12.5. Well, in excess of 12.5. Shivank back on strike. 2 more deliveries to go. Well, as we've stated, this is a funny game. Anything still possible. Slow delivery. Takes it on the full. As he worked it in the gap. The fielder, sweeper cover, gets around it. Could be a run out. Has he collected that well? Is the wicketkeeper claiming it? I don't think he's collected it cleanly, but that could have been a wicket. He apologizes immediately because the throw was good. And the wicketkeeper was far too keen to whip off the bails. And in the process, he failed.
to collect to collect the ball. 150 up for 1-7 Sports with that brace. 15 runs required of the next 7 deliveries. Final delivery of the 19th over coming up. This has been a fine over. Salman Khan steaming in. Hits it straight. That's a good shot. That should run away, but the fielder gets around it. Long on does. That was drilled so hard. Just a single in the end. So he will keep strike. 151 for 8. 14 required of the final over. Just 5 runs and a wicket coming off it. It won't be easy to score 14 of Shivam Mavi's bowling. और मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को कि शिवम मावी ही थे वो गेंदबाज जिन्होंने इस पारी का पहला ओवर किया था और इस पारी का आखिरी ओवर भी शिवम मावी करेंगे और इस पारी के पहले ओवर में 14 रन बने थे और अब शिवम मावी को वो 14 रन बचाने हैं। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए टीम 1-7 स्पोर्ट्स को। पिछले कुछ ओवर्स अगर आप देखेंगे तो वहां आपको काबिले तारीफ गेंदबाजी देखने को मिलेगी टीम किंग्सवे के गेंदबाजों की। इसी वजह से कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में तब तक हार मत मानिए। नॉट ओनली क्रिकेट का खेल, जीवन में भी तब तक हार मत मानिए जब तक आप में हिम्मत है। आखिरी दम तक लड़िए, आखिरी सांस तक लड़िए। 26 में 25 चाहिए थे एक समय पर टीम 1-7 स्पोर्ट्स को। किसी भी फील्डिंग साइड का मनोबल तोड़ सकता है ये फिगर, ये इक्वेशन, लेकिन किंग्सवे के खिलाड़ियों ने विश्वास बनाकर रखा अपने ऊपर और आप देखिए कहां खड़ा है ये मुकाबला। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए टीम 1-7 स्पोर्ट्स को। शिवम मावी पारी का आखिरी ओवर करने के लिए तैयार। पहली गेंद फेस करेंगे शिवांक वशिष्ठ। Well, you spoke about Shivam conceding 14 runs in his first over. Well, a lot has changed since that first over, isn't it? He was bowling to the top order and now is bowling to the lower order. Most of the fielders were inside the ring and now most of them outside the 30-yard circle patrolling the boundary ropes. Just a single of the first delivery. That means 13 required of the next 5. Well, from here on, if 1-7 Sports are to win this one, it would take a miracle and a big one at that. और उस मिरेकल के लिए 2 बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी टीम 1-7 स्पोर्ट्स के इन बल्लेबाजों को। शिवम मावी की तेज गति की गेंद, नहीं मिलेगा कोई भी रन। डॉट बॉल। 4 गेंदों में अब चाहिए 13 रन टीम 1-7 स्पोर्ट्स को। विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल टीम 1-7 स्पोर्ट्स के समर्थकों को कि ये मुकाबला उनकी पहुंच से दूर जाता जा रहा है। 4 गेंदों में 13 रन चाहिए टीम 1-7 स्पोर्ट्स को। शिवम मावी वो इस गेंद को बिल्कुल सही ठिकाने पर पिच कराना चाहेंगे। तीसरी गेंद आखिरी ओवर की। बल्ला घुमाया बैट्समैन ने, पूरी तरीके से हुए बीट। वेरिएशन, विविधता आखिरी ओवर्स में गेंदबाजों की बहुत मदद करती है और यहां पर वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हुए शिवम मावी पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 8 रन एंड नाउ लुक एट दिस राहुल। शिवम मावी in his past 9 balls has given only 3 runs. This has changed the game for Team Kingsway. Hallmark of a champion bowler. He was expensive in his first 12 deliveries. And look at how he's come back. That never give up attitude. No matter how bad your day has been, just fight it out for your team and for yourself. Pull through everything and come out on top. That's what exactly has happened. I don't think this is going to happen for 1-7 Sports. They can only blame themselves for that. They were cruising at one stage. It looked like they would win this one on a canter. But they've thrown it away. That might just seal the deal. Just a single. So 12 required of the final delivery.
Is that a no ball? It is a no ball. It's above the waist height. And what that means is it will be a free hit. So free hit coming up. The batsman has got the license. Not that he needed a second invitation. Is that the slice of luck that 1-7 Sports were looking for? Rahul, if I'm not wrong, this is what we call a cliffhanger. 11 चाहिए 2 में. Slower ball, free hit ball. उसको खेला डीप कवर्स की तरफ. खिलाड़ी पीछे मौजूद. मात्र 1 रन इस गेंद पर आया है. इसका मतलब कि आखिरी गेंद अब सिर्फ लीगल करनी है. फेयर बॉल होनी चाहिए और ये मुकाबला टीम किंग्सवे का हो जाएगा. What a game we have witnessed, Rahul. We have come down to the last ball. And Team 1-7 Sports, they need 10 runs in 1 ball. Well, that didn't help much, did it? Here we go. Shivam steaming in final delivery. He looks for the big swing, misses it. The keeper collects it. And in the end, they won this one. The Kingsway team has put together a big fight. And they've shown a big heart. They won this encounter by 10 runs in the end. Rather, I believe it's a 9 in the end. And 1-7 Sports, they came up short. We'll still wait for the official scorecard. But Kingsway, they won this encounter. What a comeback this has been. They came back from behind. 164 runs is what they put on the board. And 1-7 Sports, in the end, could only manage 155 for 8. Kingsway have won this game by 9 runs. कई दिनों से हम वन साइडेड एनकाउंटर्स देख रहे थे, लेकिन आज हमने जो विटनेस किया है उसने फिर से बता दिया है हमें कि क्रिकेट क्यों अनिश्चितताओं का खेल है. एक ऐसा खेल जहां कभी भी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल. पूरी तरीके से जो बाजी है वो पलटी और ये मुकाबला टीम किंग्सवे ने जीता. डेथ ओवर्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला टीम किंग्सवे के गेंदबाजों का. किंग्सवे के गेंदबाजों ने 1 वे ट्रैफिक बना दिया था. सिर्फ अच्छी गेंदें हमें देखने को मिल रही थी. डॉट बॉल, सिंगल्स, बाउंड्रीज पूरी तरीके से विलुप्त होती हुई नजर आई हमें आखिरी के ओवर्स में. और टीम किंग्सवे, दे हैव मेड अ रिमार्केबल कमबैक. टीम किंग्सवे won by 9 runs. Mayank Mishra and company, they have done a fantastic job. One of the best comebacks, I'll say, I have ever witnessed. Day 3 concludes here. Rahul, if you want to say anything about this game, please carry forward. Fantastic game of cricket. Both teams played exceptionally well, and just we had imagined, this is an absolute cliffhanger. The mind. It is our master. The master of our destiny. The way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe.
Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you become. And with that mindset, you are unstoppable. The mind, it is our master, the master of our destiny, the way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends. This power, it is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you become. And with that mindset, you are unstoppable. The mind, it is our master, the master of our destiny, the way we live, work, and even thrive. It all comes down to how we think and what we believe. Imagine the power we have to make history, to make legends.
this power. It is ours to hold and rise with and build on a new story every day. One that is only ours to tell. One that we want to be remembered by. You are in charge. Believe, become. When the odds are stacked against you, it's about pushing forward. Your belief fuels you, turning obstacles into opportunities, setbacks into strength. You keep going because you know the greatest victories come through the toughest trials. What you believe, you become. And with that mindset, you are unstoppable. So what a nail-biting contest we have witnessed, a game which will be remembered for the comeback of Team Kingsway bowlers. Welcome to the post-match presentation of the match number 4 of ECL 2025, and today I'll be joined by Chitra ma'am in this post-match presentation, and she will be giving the Player of the Match award, and the Player of the Match award goes to none other than Dikshu for his all-round performance. He made 61 runs in 40 balls, 8 fours, 2 sixes, and along with that, he took 2 crucial wickets in his 4 overs spell. Please, Dikshu, come and collect your trophy. Congratulations. Player of the Match, Dikshu. He changed the game with his bat and ball. Great all-round performance. Team Kingsway won by 9 runs. What a remarkable comeback by Team Kingsway. In last overs, they snatched the game from Team 17 Sports. Please, Dikshu. First of all, congratulations. 4 ओवर्स आखिरी के, वहां बताइए कि क्या बातचीत चल रही थी टीम के खिलाड़ियों के बीच में. स्पेशली लाइक विकेट थोड़ा बाद में स्लो था, तो जो भी पीछे का बॉल था थोड़ा फंस के आ रहा था, तो हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि बाउंड्रीज ना दे, बाउंड्रीज जितना कट करेंगे उतना उनके लिए मुश्किल होगा रन बनाने के लिए. एक समय पर 26 गेंदों में 25 रन चाहिए थे. उस टाइम क्या दिमाग में चल रहा था, कप्तान की क्या बातचीत चल रही थी, शिवम मावी के 2 ओवर्स बाकी थे, उन सब चीज़ों को किस तरीके से आप आगे लेकर गए और कप्तान ने किस तरीके से डिसाइड किया कि किस ओवर को किससे फिकवाना है? जैसा कि मैंने बोला कि मतलब हमारे पास, हमें तो पता था कि किसके बॉलर्स ओवर्स बचे हुए हैं, तो हमने उसी हिसाब से और फील्ड के हिसाब से हमने बॉलिंग करा है. वो वैसे ही मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो बॉलर्स थे, उन्होंने जो डेथ ओवर्स में जो बॉल करी है, मतलब स्पेशली जो चाहिए था हम टीम को वो करके दिया है. आपने पहली पारी में भी बहुत टाइम स्पेंड किया विकेट पर, सेकंड इनिंग्स में तो पूरा टाइम आप ग्राउंड में रहे. विकेट में कितना डिफरेंस आया था फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स टू द सेकंड इनिंग्स? विकेट में कोई चेंज नहीं था, नया बॉल थोड़ा बैट पे अच्छा आ रहा था, जो लेटर ऑन थोड़ा पुराना बॉल से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जो नया बैट्समैन जो जा रहा था बैटिंग करने के लिए. वन लास्ट क्वेश्चन, एम्प्रेस क्रिकेट लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सेकंड सीजन है. इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है, स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि हर साल जब भी हो मैं आऊँ. Okay, all the best for the future games and congratulations once again. Thank you so much for joining us. So that concludes our post-match presentation for the match number 4 of ECL 2025. But tomorrow we have 2 more matches, so don't forget to join us. Stay tuned.